को हम कहीं ना कहीं सारी चीज़ों मिक्स कर दें, क्योंकि आज की डेट में केवल एलोपैथी से ही इलाज नहीं होता, आयुर्वेदिक भी है, मेडिटेशन भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, यूनानी भी है, आपका बहुत सारी ऐसी ऐसी विधाएं हैं कि जिनके थ्रू हम अपना इलाज करा सकते हैं। और इस बारे में हमने सभी स्पीकर को बुलाया हुआ है। हमारे बीच में डॉक्टर बीसी लखेला जी भी हैं, जो हेमोपैथिक एचओडी हैं, और हमारे अध्यक्ष बीपी मावर जी भी बैठे हुए हैं। तो सभी से अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी इस टॉपिक में जो टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन, उसके लिए मैं मंद्रा जी, जो डॉक्टर मंद्रा हैं, वो इस सेशन में चेयर करेंगे। और हमारे इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर जो है LIC है, URS है, फ्लाई शॉप है, और बहुत सारी करोड़ा है, DFM मैनेजमेंट सर्विस है। मैं सभी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके माध्यम से हम, क्योंकि हर कार्यक्रम के लिए तन मन धन की जरूरत होती है, धन भी हम लगाते हैं, मन भी लगाते हैं, एक धन के लिए कहीं ना कहीं हमें जाना पड़ता है। हम उन सबका भी आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही हमारे बीच में विनोद गोयल जी हैं, संतोष मंगल जी भी हैं, हरिओम बंसल जी, बहुत सारे मेरे CA फ्रेंड हैं, आशीष त्रिपाठी जी भी हैं, तो इन सबका भी स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं डॉक्टर मंद्रा जी को जो चेयर करेंगे सेशन को, उससे पहले मैं हमारे आज के एक स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर RK मोहंती, मैं वो चाहूँगा कि वो, आप अभी सेक्रेटरी हैं ललित अकादमी के, मैं चाहूँगा कि वैसे तो आप मुझे लगता नहीं आप प्रोफेशनल डॉक्टर होंगे, फिर आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं या वैसे PhD वाले हैं? PhD वाले हैं, लेकिन फिर भी क्या है, कहीं ना कहीं कला से भी कभी जैसे कहते नहीं, म्यूजिक सुनो आप तो आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कला भी कहीं ना हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करे, इस बारे में कुछ बताएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आप आइए अपना उद्बोधन। सभी लोगों को नमस्कार। और जैसे कि मेरा परिचय अभी करवाए, मेरा नाम डॉक्टर राहस कुमार मोहंती है और मैं रिसर्च और कला मैंने कला दुनिया की ही व्यक्ति हूँ। आज जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो बेसिकली ये मेरे ख्याल से हेल्थ के ऊपर है, जो बिल्कुल मेरे सब्जेक्ट से बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है। बट क्या है, एक एक शब्द में अभी मेरे को याद पड़ गया है, मैं आपको जस्ट शेयर करना चाहूँगा। तो हमारी देश तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो आज मैं यहाँ पे डाइवर्सिटी इन यूनिटी हूँ, ठीक है। तो कल मेरे किसी बंधु ने मेरे को इसके बारे में जानकारी दी है। तो आज शनिवार है, लगभग छुट्टी रहता है, बट हम लोग अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जा रहे हैं। तो उनके लिए लगभग 60 जो कलाकार है उनके साथ मतलब उसी प्रोग्राम में जाएंगे। उसको हम फेस्टिवल ऑफ इंडिया अब्रोड कहते हैं और इस बार इसका नाम है नमस्ते फ्रांस। तो हम मतलब ललित कला अकेडमी इसका नोडल एजेंसी है, तो हम लोग उसी काम पे लगे हैं। तो आज मैंने कहा कि मैं ऑफिस तो आऊँगा, तो सुबह मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में होते हुए जाऊँगा। बाकी हमारा काम जो है बिल्कुल कल्चर एंड एस्पेक्ट सब कल्चरल प्रमोशन काम है, आर्टिस्ट का ऊपर हमारा हम लोगों की काम है। बट आज जो विषय वस्तु यहाँ पे है, इट इज़ बेसिकली ऑफ हेल्थ। अगर देखा जाए सबके ऊपर अगर बात करें, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन आवर लाइफ। बट हम जो मैं खुद ही अगर अपने ऊपर देखूं, वी आर नेग्लेक्टिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन आवर लाइफ। किसी को ये सही लगे ना लगे, बट इट इज़ ए हार्ड फैक्ट, क्योंकि सभी डॉक्टर लोग हैं। उन लोगों को क्योंकि इनकी परसेंटेज अगर देखेंगे हमारी देश में पॉइंट परसेंट निकलेंगे, और बाकी जो लोग हमारी जैसा आम इंसान है। और हमारी देश में अगर देखा जाए, बहुत ही मतलब परसेंटेज के लोग नहीं आएंगे जो बिल्कुल हेल्थ के प्रति सुबह से लेके मतलब एक तरह से सजग रहे। अगर सच बताए तो हम लोग सजग नहीं है। मैं खुद ही सजग नहीं हूँ। अगर हम पढ़े लिखे हो के हम ही सजग नहीं है, तो बाकी लोगों के बारे में क्या बताया जाए। तो जो डॉक्टर्स लोग यहाँ पे हैं, उनसे सुनना बहुत जरूरी है। हेल्थ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सब्जेक्ट इन आवर लाइफ, एंड इट इज ऑल्सो ए मोस्ट क्राइसिस इन आवर कंट्री ऑल्सो। ये बात फैक्ट है। अगर हम कंपेयर करेंगे सिटी और छोटे शहर और मेट्रो सिटी एंड विलेज को, आपको बहुत बड़े डिफरेंसेस आपको मिलेगा। और मेरे ख्याल से हेल्थ के ऊपर हमें
बहुत आगे और चलना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है। साइंटिफिकली डेवलपमेंट तो हो रहे, काफ़ी अच्छे डॉक्टर, काफ़ी अच्छा इसके ऊपर साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है। बट जो अवेयरनेस है, हम हेल्थ के ऊपर जो कॉन्शियसनेस है, वो मुझे लगता है कि हमारी अंदर, मतलब हम ही लोगों के अंदर कमी है, हमें इसको बढ़ाना है। एंड आई एम रियली थैंक्स टू CSIR जो फाउंडेशन अभी इसी प्रोग्राम को कैरी आउट करता है। इसके माध्यम से हेल्थ के अवेयरनेस को बढ़ाना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म। तो इसको एक्सिलरेटेड करना, इसको हर जगह पे लेके जाना, आज दिल्ली में हो रहा है, हो सकता है काफी शहरों में आप लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम किए हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आगे इस चीज को जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है। मल्टी डिसिप्लिनरी इन द सेंस कि आप, अभी हम डॉक्टर के साथ है, अगर हम इसको लेके एजुकेशन में जाएंगे, नॉर्मल एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में, अगर इस प्रोग्राम को हर साल एक मैंडेट बना दिया जाए, तो जो अवेयरनेस है हेल्थ का, हम कुछ परसेंटेज डेवलप कर सकते हैं। और बाकी आज का दिन जो है, मेरे ख्याल से मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर डॉक्टर्स का दिन है। इवन चार्टर्ड अकाउंट्स के बारे में बताया गया, बट आज यहाँ की जो मंच है वो हेल्थ के ऊपर है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जितने भी हमारी डॉक्टर्स भाई बहन है और सीनियर लोग हैं, वो हमें इसके बारे में जानकारी देंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, बिकॉज मैं हूँ ही नहीं इस फील्ड की, बट जितनी स्वल्प ज्ञान है उसी के अंदर मैं आज की जो मेरा वक्तव्य यहीं पे रुकना चाहूँगा। आप सब लोगों को अशेष धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Very good morning to all of you. And as we have gathered here to commemorate the National Doctors' Day, today I'd like to invite Dr. Mayank Daral. He's a consultant orthopedic at Prima Super Speciality, and he'll be speaking about the history of medicine. I invite Dr. Mayank on this side. I request Mr. BP Mawarji, please come on the dais. स्क्रीन पे नहीं है। Good morning, everyone, and a very happy Doctors' Day. And I would take this opportunity to thank CSR Initiative and Research Foundation for giving us the opportunity and celebrating this Doctors' Day. And I'm equally glad that today is CA's Day as well. And I think kahin na kahin, doctors without CA are also incomplete, sir. So I was asked this question outside ki, how does a doctor feel on a Doctor's Day? तो व्हाट स्पेशल अ डॉक्टर फील्स ऑन अ डॉक्टर्स डे इज, ये हमारा एक बही खाते का दिन सा होता है, ऐसा कुछ. सो इफ आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई गेट टू नो इट्स डॉक्टर्स डे, देन आई रिसीव अ मैसेज फ्रॉम अ पेशेंट एंड आई फील हैप्पी that I could impact a life. So these messages that are coming from the patients on a doctor's day is an appreciation to us that what we have done. It's not that we want the appreciation, but that the change we could make in somebody's life and their family's life. So yes, that's what a doctor feels special on a doctor's day. And it even encourages us further to do more for the society. Like I've said, acknowledgement once again. And I will be speaking on evolution of medicine in appreciation to the progresses made
But why is understanding evolution of medicine very important? So now every doctor is practicing their field of specialization. Suppose I am practicing allopathy, and there are various kind of doctors again practicing their kind of specialization. But evolution understanding is important, so that when we get to know the entire evolution of medicine, so that we can give better care and treatment to the patients that there are. And the alibi or the proverb that my patient gets well, और मेरा पेशेंट केवल मेरी विधि द्वारा ठीक हो, ये बहुत अलग चीजें हैं. So patient healing is important, and for that, understanding the evolution of medicine is important, because now when that science came, suppose allopathy came, it just progressed or improved the healing art that there was already. Same allopathy came. So before that there was Ayurveda. So it progressed. Now when one branch comes and that branch doesn't acknowledge or doesn't learn or doesn't integrate with that, so that again a different thing. So integration is only possible when we know the entire evolution of medicine and how it has been going, and then in an interdisciplinary way progress further. Because suppose if a doctor really believes, and that's, yes, all doctors do believe in their medicine, but then there are other people also practicing their field, or even doctors now practicing other tips and tricks from different fields, right? So now we cannot stop anybody, and have not ever stopped anybody from giving over the counter drugs, or giving simple basic drugs. Even people not qualified are giving, but then when understanding this thing and even making it better, so it makes the things better for the people who are practicing at their level without being from the specialization, and then in a way that they make it even better and the complications are occurring less. So understanding evolution both for them and for the people who are specialization even makes it even further better. So that's why we are going to speak on the evolution of medicine. So how did the evolution of medicine start? So suppose if we take on to the time from before Christ and Anno Domini. So there was like Mahabharata Kal se hi we were having a registered or first written documentations of doctors or our rishis practicing medicine. So the first was Rishi Agnivesh in 800 BC, then Rishi Atreya, then Acharya Charak, then Shushruta, as we all know, and Acharya Vagabhatta. जो डार्विन की थ्योरी आई, देन ह्यूमरल थ्योरी, देन जर्म थ्योरी, दे आर ओनली 1800 years old. Yes, and this is the common era. And now looking at the evolution of medicine, it has been classified into ancient medicine पहले हुआ जो, फिर medieval medicine is in which where राजे महाराजाओं के टाइम पे they were there. That is the development of Unani medicine and other kind of public health initiatives. Then colonial era, when we were being colonized, then the other allopathic medicines and government medical colleges were coming up slowly. Then post independence was the real happening of the nation's healthcare system. National health programs were happening. Then late 20th century mein, late 20th century mein, I will tell you further how certain revolutions and certain more breakthrough technologies were making better. And now coming to present day. So present day is again we are taking a leap into the future. We are taking a leap into the future because with the advance of robotics and AI, artificial intelligence, healthcare is going on another level. And yes, coming back to how evolution of medicine started. So evolution has a lot with civilizations. So jahan jahan civilization, people were practicing their healing. The first healer is the body, but then people who were helping medicine get better in their own way, they were being called the doctors at themselves. So from our Indian system of medicine, we had the god of medicine Dhanvantri, Atarya, Charaka, and Sushruta. Now ancient times mein, we are comparing about what were the advancements made of the Indian system, and then again the colonial system. Ancient times mein, we had key advancements were Ayurveda, herbal medicine, and यहाँ तक सुश्रुत जी was practicing surgery, right? और उनके surgical instruments भी आज तक they are being copied in general surgery or our orthopedic things. Yes. Then medieval period, like I said, Unani medicine and development of small hospitals या चिकित्सालय was there at the time of emperors, जैसे अकबर the great के time पे. Then colonial area में western medicine was being introduced. So western medicine was introduced in India during the colonial time. And then उस time पे Dr. B.C. Roy got very famous. Then Dr. Kutnis got very famous in China, right?
Then post independence, we had modernization of healthcare, public health initiatives like Pulse Polio program and other such programs. Uh, Notable figures were, of course, Dr. C.V. Raman, then nuclear medicine with Dr. APJ Abdul Kalam. Again, B.R. Ambedkar helped eradicate the masses of illiteracy. Then late 20th century, we started to have medical tourism. And again, technological advancement as in basic technological advancements उस time पे advancements कहेंगे उन्हें, but they were very basic. Suppose like the use of X-ray machine, CT scan, MRI, they were not very prevalent in India. Even an MRI machine at the late 20th century or the CT scan machines were considered as advancements. Now is coming the present day, जिसमें integrative medicine, telemedicine, research institutions are coming up, and we are competing again at the same level in which any other institute in the world is doing that, right? So again, in the between that, we had lost because basic healthcare provide nahi ho raha tha. We have come to the same stage where our doctors, all of us, are competing at the same healthcare that is being provided anywhere else in the world. Yes. Now, coming to what the West was doing in ancient times, herbal remedies were being done, and Hippocrates and Galen. Yes, and Hippocrates ka ek quote that grew very famous is "Let thy food be thy medicine." Yes, and he is considered as the father of allopathy. So yes, and our oath in medicine is still by Hippocrates only. Then Middle Ages में humoral theory came, in which they say that हमको चार चीजें लाइफ में बैलेंस करनी होती हैं. In the bile and other components, they say that any four things that misses, I cannot go on explaining the entire theory, but that any four things that misses from the body, that's where the disbalance causes and the illness starts to come. So humoral theory states that. Then when medical colleges were being established, the what the Western or colonial medicine did was to document and research further. So while our ancient people were documenting or doing very much things better than anybody else, but they were not documenting and researching, or their knowledge was just left to them, or maybe it was lost, maybe because of colonization or other invasions. But then, in a proper systematic way, dissections, anatomical studies, and researches being documented were being carried out. And then, of course, the famous germ theory was there in 19th century. Then vaccination started to happen. Vaccines started to happen by Louis Pasteur, Robert Koch. Four postulates were very famous. Then early 20th century में came the famous use of antibiotics by Alexander Fleming. जैसे he discovered one day that in his petri dish how penicillin है वहाँ पे, उसकी वजह से germs grow नहीं कर रहे हैं. So it was very much luck by chance, but yes, luck by chance also happens to people who are very much passionate and doing their work. That's how the famous antibiotics came into use by Alexander Fleming. And then late 20th century में in the West, organ transplantation start हो गया था, genetic engineering start हो गए थे by James Watson, Francis Crick. And now precision medicine. Now it's era of precision medicine that is coming, artificial intelligence ka use, and the use of robotics in a very thorough, systematic way. Now the question is that era of digitalization is coming, right? And mobile health has become a very norm. So patients are preferring on-call consultations over in-visit consultations, right? So in e-health, healthcare services provide with the support of information and communication technologies such as computers, mobile phones, satellites. So my question to you is, what is your take on this? What should be? Is e-health going to outlive the clinical practice? So yes, I just want you to ponder on this from the point of perspective. If somebody of our near and dear has to undergo something, will a patient be satisfied by a mobile phone consultation? But what my take on this is, clinical medicine is no doubt supreme. Technology is there to facilitate us and not replace us. There are even apps which say that you put your symptoms and it will automatically give you the diagnosis and medications based on the case study of thousands of doctors of what they prescribe and write. Right. So artificial intelligence has come to that level. But then yes, again, once again, clinical medicine is the supreme. Conclusion, recapitulation of the journey of medicine of India and recognition of the contribution made by all the previous doctors in all the specialties. And yes, recognizing this only can India once again, like it started earlier, lead the world in the field of medicine. It is doing so, but yet even further is going to do much better by the Indianness of the medicine, in which there is going to be integration of everything, and yes, and lead the world again.
by all the research that has started to happen. Thank you so much. डॉक्टर रुद्राज जी को भी निकलना है, तो मैं चाहूँगा हमारे बीच डॉक्टर सूरज मंडल जी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हैं, वो एक बार मोमेंटो से इनको स्वागत कर दें, डॉक्टर आर के मोहंती जी का। Thank you so much, Dr. Mayank. It was a very informative lecture regarding the history and the journey of medicine in India. Now I'd like to invite Dr. Kavya Goel. She's Assistant Professor of Anesthesia at SGT Medical College, and she's going to tell us about chronic pain management. Thank you very much, ma'am. Good morning, everybody. I'm Dr. Kavya Goel. I'm an assistant professor in anesthesia at SGT Medical College. So to start off, I would like to thank CSR Research Foundation, especially Mr. Deendayal Agarwal ji, for giving me this platform and an opportunity to speak on one of the most important days of the year, Doctor's Day. I'm an anesthesia specialist, so pain management is a subset specialty for me. But I chose this topic of chronic pain because I'm sure chronic pain is affecting almost everybody in this room today. As you'll see, chronic pain is defined as pain that lasts for more than 3 months, or something that a pain that takes longer to heal than that is usual duration of time that it takes. So me in my 30s, I have started experiencing chronic pain as early as now, and I'm sure as age advances, all of us are expected to have some or the other form of chronic pain. And this is one aspect of modern medicine that I am familiar with that requires extensive integration of healthcare. So it requires the use of physical therapy, psychological therapy. It uses yoga, naturopathy, exercises, then forms like Tai Chi, behavioral therapies. So at the overall goal of chronic pain management is one, to relieve the pain of the patient, and second is to improve their function of and improve their activities of day-to-day life. Most of us are not satisfied with drug therapy alone. हम में से कितने लोग हैं जो पेन के लिए ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं? सबका रामबाण पैरासिटामोल, पैरासिटामोल से काम नहीं किया डाइक्लोफिनेक. वेस्टर्न मेडिसिन में ओपियोइड्स को ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है. तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? लाइक सर हैज़ ऑलरेडी ब्रीफ्ड यू ऑन अ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन. आई विल गो थ्रू my presentation with the history of pain management from the earlier times. So 1500 to 1300 before Christ, yes, I am so glad for sir that he has explained the terms BC and AD already. So in practitioners in India, China, Egypt were already using
ओपियोइड क्या है? ओपियोइड ओपियम पॉपी से बनता है, ये सारी चीज़ें बहुत पहले के ज़माने से यूज़, बट जैसे सर ने बताया कि इंडियन मेडिसिन में, वो हम सबको पता है इंडियंस कागजी कार्रवाई में बहुत बुरे होते हैं, तो इंडियन मेडिसिन में डॉक्यूमेंटेशन हैज़ नॉट ऑलवेज बिन द बेस्ट, एंड ऑफ कोर्स थ्रू कॉलोनाइजेशन एंड थ्रू एक्सप्लॉयटेशन बाय इन्वेडर्स all our documents have been erased. But Western medicine has been able to document their histories and their research and everything much more methodically. So उसके बाद हम आते हैं जो लास्ट डॉक्यूमेंटेड अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड टेक्स्ट हैं पेन थेरेपी पे फ्रॉम चाइना, वो एक्यूपंक्चर को यूज़ करते हैं. एक्यूपंक्चर इज़ अ वेरी वेरी वेल नोन एंड वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांच ऑफ मेडिसिन, एंड एट द मोमेंट जैसे मुझे पता लगा है कि जुलाई में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट एक्यूपंक्चर की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर रहा है फॉर पेन स्पेशलिस्ट ऑल थ्रू. सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ केयर कि एक एलोपैथिक मेडिसिन एक्यूपंक्चर की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दे आर प्रमोटिंग अनदर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ब्रांच. उसके बाद हम आते हैं तो यूरोपियंस ने 50 AD में दे हैव यूज्ड इलेक्ट्रिक फिश. इलेक्ट्रिक फिश वर यूज्ड टू ट्रीट हेडेक्स एंड माइग्रेन्स इन पेशेंट्स. तो हेडेक्स और माइग्रेन्स में इलेक्ट्रिक फिश का क्या लेना देना है? गेटिंग थ्योरी ऑफ पेन कहते हैं कि अगर पेन का कोई पाथवे चल के ब्रेन तक जा रहा है, आप अगर बीच में उस पाथवे का गेट बंद कर देंगे और उसका दूसरा गेट खोल देंगे, उससे वो पेन स्टिमुलस ब्रेन तक जाएगा नहीं और हमें वो पेन महसूस नहीं होगा. तो ये गेटिंग थ्योरी, जैसे अगर हम अपना सर दबाते हैं तो वो जो टच है उसकी वजह से हमारा जो पेन पाथवे है वो ब्रेन तक नहीं जा रहा, वो टच बीच में उसको रोक के अपनी तरफ खींच रहा है. ये थियरी, गेटिंग थ्योरी, जब तक किसी को समझ आई उससे पहले से ही इन्होंने यूज करनी शुरू कर दी. इलेक्ट्रिक फिश जो है वो करंट देती थी पेशेंट को, वो करंट महसूस होता था तो पेशेंट का दर्द उसको महसूस नहीं होता था. 1150 AD पे हम आए तो सबसे पहले एक ड्रग डायरेक्टरी फॉर्म हुई जिसके अंदर वेस्टर्न मेडिकेशंस में जितने ड्रग्स यूज होते हैं उनकी लिस्ट बनाई गई, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ दोज ड्रग्स वर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेन. क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट साइन या सिम्टम किसी भी डिजीज का होता है पेन. तो जिसको समझ नहीं है वो उस डिजीज को ट्रीट करने की जगह उस पेन को ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी समझता है. उसके बाद 1200-1300 AD में नारकोटिक्स यूज होने लगे. नारकोटिक्स का मतलब वही जो भी ओपियम से डिराइव्ड जितने भी ड्रग्स हैं, ओपियोइड्स, कोडीन, मॉर्फिन, ये सब यूज होने लगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेन ड्यूरिंग पेनफुल सर्जरीज. एंड 1350 में यूरोपियंस ने मिक्स किए नारकोटिक्स और हर्ब्स. नारकोटिक्स और हर्ब्स के साथ उन्होंने एक और बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बनाया, वो था नारकोटिक्स और अल्कोहल का, जिससे कि पेशेंट क्या मतलब किसी भी इंसान को कुछ नहीं पता चलेगा. 1820 से 1830 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो गया मॉर्फिन का. सो मॉर्फिन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पोटेंट ओपियोइड्स दैट वी नो. So use of morphine was very, very important because it was one of the first drugs which caused complete pain relief as well as very good satisfaction to the patient. However, 50 साल के अंदर अंदर ही लोगों को ये रियलाइज होने लग गया कि 1870s तक कि इसका अब्यूज पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और एडिक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. एक बार आप यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो आप रुक नहीं सकते हैं, उसको यूज़ करना पड़ता है इवन दो योर पेन इज़ गॉन. इसके ऊपर रेगुलेशन लगानी स्टार्ट की गई, एंड दैट इज वाई टिल डेट बिफोर प्रिस्क्राइबिंग नारकोटिक्स और एनी ओपियोइड एजेंट्स टू एनी पेशेंट देयर आर अ लॉट ऑफ प्री रिक्विजिट्स दैट यू हैव टू फुलफिल. तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी हम मॉर्फिन दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. ये पेन मेडिसिन. अब 18, ये मेरा फेवरेट पार्ट है. 1846 में फर्स्ट पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ईथर एनेस्थीसिया हुआ. यहाँ से एनेस्थीसिया की शुरुआत होती है और उसके 2 साल बाद ही क्लोरोफॉर्म को यूज़ किया गया, जो मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं कि वो रुमाल में लगा के सुंघा के बेहोश करके किडनैप कर लिया. दैट इज क्लोरोफॉर्म, बट इट वॉज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर पेनफुल प्रोसीजर्स एंड इम्पॉर्टेंटली ड्यूरिंग डिलीवरीज ऑफ बेबीज. चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूज़ किया जाता था. 1920s में रिकमेंडेशन स्टार्ट हुआ पेन मैनेजमेंट के लिए बिकॉज दे रियलाइज कि खाली दवाइयों से काम नहीं चल रहा है या एडिक्शन पोटेंशियल्स हैं और भी कुछ लाना पड़ेगा. 1920s में साइकोथेरेपी और न्यूरोसर्जरी का काम आया. साइकोथेरेपी साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जिससे आप पेशेंट के माइंड कंट्रोल उसका माइंड कंट्रोल करना टीच करके उसको उसकी पेन के ऊपर कंट्रोल लाना
सिखा सकते हैं. एंड न्यूरोसर्जिकल, देयर आर लॉट्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स दैट यू कैन डू टू रिलीव पेन, बट उसके बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं. 1950s में बिहेवियरल अप्रोचेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का रोल लाया गया, स्पेशली पेन रिलीफ में. इसमें एक बहुत फेमस एग्जांपल है लमाज टेक्निक का. सो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं प्रेग्नेंट वुमन को, ताकि वो अपनी पेन पे कंट्रोल कर सके. 1990 में जाके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि हमें ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है पेन मैनेजमेंट की, क्योंकि जो ट्रीटमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं वो सफिशेंट नहीं है या उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. तब जाके उनको ये रियलाइज़ हुआ, उन्होंने ये मोडालिटीज़ कंसिडर करी कि फिजियोथेरेपी इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ पेन रिलीफ. पिलाटेस, योगा, नेचुरोपैथी, एक्सरसाइजेज, देन एक बहुत important, of course, homeopathy has been around for a long time and a very well established branch of medicine, which is very important in treating chronic pain. And बहुत importantly, diet in treatment of pain. ये because role of diet in keeping fit has been around for a long time, but role of diet in pain management has not been so recent. So this brings to the next part of my topic, which is the multiverse of modality. So अगर आप में से कोई मार्वल मूवीज देखता है या आप नहीं देखते तो आपके बच्चे देखते होंगे, उसके अंदर मल्टीवर्स का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है. मल्टीवर्स मीन्स कि इस टाइम पे हमारे यूनिवर्स के अलावा बहुत सारे और यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, जो हमारी चॉइसेस पे या हमारी अवेलेबिलिटीज़ पे या हमारे लाइफ की स्टोरी से डिफर करते हैं. So, at this moment, any person suffering from chronic pain will wish that they had a multiverse of opportunities, of options to choose from, which brings us to the treatment of modalities available, जो कि सबसे पहले हमारी फार्माकोथेरेपी है, जो हम दवाइयाँ खाते हैं. वो ओपियोइड्स हो सकते हैं, नॉन ओपियोइड्स हो सकते हैं, स्टीरॉइड्स हो सकते हैं, नॉन स्टीरॉइड्स हो सकते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं, बट मोस्टली उससे क्रॉनिक पेन में ट्रीटमेंट नहीं मिलता है. अक्यूट पेन फिर भी हम मैनेज कर सकते हैं, जो हमें चोट लगने के बाद होता है, लेकिन वो जब क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके लिए हमें और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. फिर हम इंजेक्शंस की तरफ जाते हैं मॉडर्न मेडिसिन में. जहाँ पे पेन है वहाँ इंजेक्शन दे दीजिए, जिस नर्व से पेन आ रहा है उस नर्व को ब्लॉक कर दीजिए, जिस जॉइंट में पेन है उस जॉइंट में इंजेक्शन दे सकते हैं. सर्जरीज के बारे में हमने बात करी थी. एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिजिकल थेरेपी. फिजिकल थेरेपी जो हमारा फिजियोथेरेपी अलाइड साइंस है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट. वो आपकी एक्सरसाइजेज में आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है. देन ताई ची इज़ अ एंशिएंट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स और रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो आपके बैलेंस और पोस्चर में हेल्प करता है. Yoga and naturopathy is a huge part of maintaining and preventing chronic pain. By practicing yoga, we can prevent the onset of chronic pain, and by practicing it correctly. Then psychological therapy, behavioral therapies, approaches के बारे में हमने बात करी. इन सब के बिना आज की डेट में chronic pain management is not complete. So it is an integration of all these things that will lead to complete patient satisfaction, which is why we should thank the Ministry of Ayush for integrating all the healthcare modalities available in India specifically. And recently that the ordinance that has been passed that there should be Ayush OPDs in all major government hospitals, so that the patient not only gets all the options available at the same place, but also that it is regulated in a manner that when the patient is seeking Ayurveda or Unani treatment outside of hospital setup, they will not be fooled by quacks or practitioners who don't know the practice as well, but they're just practicing it, saying कि ये बहुत time से हमारी family में चल रही है. So patient safety is all the more important, and this integration of Ayush OPDs will help with that very much. So in the end, I would like to thank everybody and wish everybody a very happy Doctor's Day and a happy CA Day also. Thank you. Thank you, Dr. Kavya. It was a very enlightening lecture regarding the pain management and what all modalities are now being introduced to manage the same.
I would now request Mrs. Chandni Mehra, who's physiotherapist at Lady Harding, to enlighten us about physiotherapy and empowering the journey to optimal health and well-being. Very warm good morning to everyone. I'm Chandni Mehra, physiotherapist from Lady Harding Medical College, and I would like to thank the CSR Research Foundation for inviting me here. I'm really glad to be a part of this initiative, and I would like to thank ma'am for already introducing my topic, physiotherapy. Now I have come here to discuss about physiotherapy, what physiotherapy is and what it is all about. And my today's topic is empowering your journey to optimal health and well-being. So for that, we need to know what is health and well-being. Health and wellness and overall well-being aren't just absence of a disease or any kind of condition. It is also about your ability to function at your best, and to live a life free from physical limitations. And in this presentation, we'll delve into the how physiotherapy is integral part and how it helps you to attain that optimal health wala part. So I'm not going to much of these details, but I will just tell you that physiotherapy is a synonym these days, is a synonym with exercise. कभी भी आप अगर सुनेंगे कि मुझे दर्द है, गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो पहला जो चीज दिमाग में आती है वो ये कि चलो फिजियोथेरेपी करवा ली जाए. बट क्या हम ये जानते हैं कि फिजियोथेरेपी है क्या? मैं एक छोटा सा किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. मेरे पास रोज डेली बेसिस पे 50-100 लोगों की ओपीडी आती है. तो पेशेंट मेरे पास आके पूछते हैं कि मैडम हमें फिजियोथेरेपी कराना है. एंड व्हाट आई डू इज आई टेल देम एक्सरसाइज की घुटनों की एक्सरसाइज आपको करनी है, गर्दन के लिए एक्सरसाइज करनी है, एंड कमर दर्द के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है. बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड. व्हाट दिस इज, मैडम हम तो मशीन लगवाने आए थे. So the irony is that people don't know what exactly physiotherapy is all about. Physiotherapy is not just the modalities, the various machines we use. It's basically the exercise. The crux of physiotherapy is exercise, exercising the joints, exercising the muscles. That is what physiotherapy is all about. Now, physiotherapy, as the word physiotherapy states, it is a therapy. It helps people recover from conditions. And physiotherapy is something that comes, as ma'am said about allied health sciences, that comes after the main part. For example, if we are talking about a surgery, for example, we are talking about a knee replacement. Once the surgery is being done, now the next part is rehabilitation. वापस उसको normal जिंदगी में functional कैसे बनाया जाए. वो चेंज होते ही एकदम से खड़ा नहीं हो जाएगा. उसके लिए उसको एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, उसको सिखाना पड़ेगा, गेट ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. देन ओनली ही विल बी एबल टू मूव एंड डू थिंग्स in his own functional life. Now, what physiotherapy includes? Physiotherapy includes modalities, education of the patient, therapeutic exercises, muscle re-education, hydrotherapy, soft tissue mobilization, breathing exercises, joint manipulation, and mobilization. These are some of the aspects of physiotherapy. Now, what physiotherapy does is it helps the person do his work faster and in an easier way. It prevents falls and injuries because of better posture and balance. And this also controls the risk factors. It cuts the risk factors for heart diseases, stroke, diabetes, and cancer. And even someone falls sick, so recovery maybe it also helps in a faster recovery.
मूड और सेल्फ इमेज तो बूस्ट करता ही है साथ में. इफ वन एक्सरसाइजेस इट बेटर्स द मूड एंड दिस self image of a person. Now, these are some of the modalities that we use in physiotherapy. As you can see, electrical stimulation hai, biofeedback hai. Most of these modalities, as ma'am said, are used for pain management only. And the other part of the therapy is exercises. So, these sari therapies we use to manage pain depending upon the condition the patient is having. Now the extent to which physiotherapy is spread in this world of medicine. Now, what I feel is सबके पास अपनी अपनी स्पेशलिटी है. देयर इज ऑर्थोपेडिक्स, देयर इज मस्कुलोस्केलेटल, देयर इज न्यूरोलॉजी, देयर इज कार्डियोवास्कुलर. बट फॉर अस हमारे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार जब वहां से पेशेंट निकलेगा, उसका ट्रीटमेंट हो गया, हार्ट सर्जरी हो गई, कोई न्यूरोलॉजिकल सर्जरी हो गई, स्ट्रोक से रिकवरी है, कोई पल्मनरी कंडीशन है, देन द पेशेंट हैज टू कम टू अस फॉर द रिहैबिलिटेशन पार्ट, एक्सरसाइज पार्ट. अपनी फंक्शनल जो एबिलिटीज हैं उनको इंप्रूव कैसे करना है, फंक्शनली अपनी डे टू डे लाइफ को, अपनी एडियल एक्टिविटीज को इंप्रूव कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और हर एक फील्ड से आते हैं. और मस्कुलोस्केलेटल हो, न्यूरोलॉजी हो, कार्डियोवास्कुलर, दीज आर सम ऑफ द फील्ड्स I am mentioning. And among that, the latest and the recent one is women health physiotherapy. People don't know much about women health physiotherapy क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंडियन women और इंडियन कल्चर में women take a back seat, हमेशा पीछे से. सपोर्ट पूरा रहता है, सब कुछ करेंगे, फैमिली का ध्यान रखेंगे, सबके लिए सब करेंगे, बट जब अपनी बारी आ जाती है तो दे जस्ट फॉरगेट कि नहीं, जो बच्चा कुछ है वो ही सब ठीक है. बट मुझे ऐसा लगता है औरतों को अपना सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि दे आर द बैकबोन ऑफ द फैमिली. कभी भी आप फैमिली में देखेंगे कि अगर वाइफ या लेडी बीमार पड़ जाए तो पूरी फैमिली डिसअप्ट हो जाती है. बच्चे हस्बैंड हो तो उतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज शी इज देयर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग ना. आई नो, आई थिंक यू विल एग्री विद मी अबाउट दिस. तो ये इस चीज का वो है. दीज आर सम ऑफ द कंडीशन जो वुमेन हेल्थ में हम लोग देखते हैं. यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली पीपल वोंट डिस्कस, दे वोंट कम आउट विद इट. उनको ये एहसास भी नहीं होता कि ये परेशानियां हैं और इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है. Now, physiotherapy is, of course, it is therapy, but it is also in these times it is preventive too. Preventive physiotherapy is to minimize the risk to your physical health. Now, physiotherapy usually people go for therapy. एक बार पेन हो गया तो उसके बाद जाएंगे थेरेपिस्ट के पास और जाके फिर ट्रीटमेंट करा लेंगे और फिर उसके बाद ठीक हो जाएंगे. बट द पॉइंट इज हम होने ही क्यों दें उस चीज को? Why should we let that कंडीशन अकर इन द फर्स्ट प्लेस? तो उस केस में आ जाती है प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी. प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी में क्या क्या जो कॉमन चीजें हैं? दीज आर इंप्रूविंग योर फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग योर बॉडी, एनहांसिंग योर बैलेंस एंड जॉइंट प्रोप्रियोसेप्शन एंड इनर एंड्योरेंस. ना आज का जो सबसे कॉमन सवाल है, वो जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है टू मच ऑफ सिटिंग. अभी भी देखिए हम सब बैठे हुए हैं और हम बैठे ही रहते हैं घंटों घंटों, है ना. कौन है जो खड़े होकर घूमेगा या सारा दिन भर चलता रहेगा घूमेगा? किसी का प्रोफेशन हो तो ठीक है, बट वंस वी रियलाइज कि ओल्डन टाइम्स में ह्यूमन बींग्स क्या करते थे? दे वर वॉन्डरर्स, घूमते रहते थे खाने की तलाश में, घर की तलाश में. दे वर नॉट सिटिंग. तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बनाई गई थी चलने के लिए. गॉड क्रिएटेड अस टू मूव, बट हमने अब क्या कर दिया? हम बस बैठे ही रहते हैं. एवरीथिंग इज जस्ट अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ अ बटन. खाना चाहिए, हाजिर है. कपड़े चाहिए, हाजिर है. सामान, ग्रोसरी, एवरीथिंग इज अवेलेबल. तो जो नीड है चलने की, घूमने की, फिरने की, वो खत्म होती चली जा रही है. इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हम फेस कर रहे हैं? स्टिफ बैक हो गई, नेक में पेन हो गया, घुटनों में दर्द हो गया. तो ये सारी कंडीशन इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर सिटिंग. अब सिटिंग में प्रॉब्लम क्या है? बैठना तो पड़ेगा. देखो जॉब है मेरी, सेडेंटरी 9 to 5, सिटिंग वाली 9 to 5 की जॉब है, तो मैं क्या करूं? तो उसमें क्या करना है वो हम बताते हैं. तो नॉर्मल कॉमन हैबिट जो हम बैठते हैं ना, उसमें भी पोस्चर का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से हमें बैठना है. नॉर्मली हम झुक के बैठ गए, जैसे भी कंफर्टेबल है वैसे बैठ गए, पर अगर लॉन्ग टर्म में इफ वी टेक दोस पोस्चर्स, दे आर वेरी बैड फॉर आवर ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग. तो सबसे खराब कॉमन हैबिट्स जो हैं, जो पोस्चर के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज स्लाउचिंग और राउंडिंग ऑफ आवर बैक. ऐसे कमर झुका के इस तरह से हम बैठ जाते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यूजुअली वी सिट लाइक दैट, झुक के, गर्दन झुका के, हाथ कहीं भी है, पैर कैसे भी हैं, बस बैठे रहते हैं इस तरह से. स्लाउचिंग होती है, राउंडिंग एंड हंचिंग ऑफ शोल्डर्स होता है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है, कॉकिंग ऑफ द रिस्ट होता है, सिटिंग इन ओवरफ्लेक्स्ड हिप्स. तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम गलत कर रहे हैं, जो हम जानते भी नहीं है. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इरेक्ट स्टैंडिंग, जो ह्यूमन को एक वरदान मिला है कि जानवरों में से वो ही एक है जो सीधा खड़ा हो सकता है ना, पर उस सीधा खड़ा होने के हमें बहुत सारे नुकसान भी वो भरने पड़ते हैं. वो क्या नुकसान है? कि हमारी बैक के इश्यूज आ जाते हैं, हमारे नेक के इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि हमें इरेक्ट खड़े होने के लिए जो हमारे एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ मसल्स है नेक के और बैक के, वो हर समय काम करते रहते हैं. दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग. बैठे हो तो भी, खड़े हो तो भी, चल रहे हो तो भी. तो जैसे हार्ट कॉन्स्टेंटली वर्क करता है, वैसे ही बेचारे बैक के मसल्स को भी कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ता है. तो उसमें बहुत जरूरी है कि हम उन मसल्स का यूज बहुत एफिशिएंटली करें ताकि उनको तकलीफ ना दे सके. तो these are some tips जो we can use
टू करेक्ट आवर पोस्चर सो दैट जो हम बैक के इश्यूज हैं, नेक पेन के इश्यूज हैं, उनसे बच सके. तो दिस इज द करेक्ट पोस्चर व्हाट वी शुड टेक. दिस इज द एग्जैक्ट position, the use of this is called ergonomic. Ergonomic is basically the ways how your work environment, your furniture, your way of sitting should be. तो आई लेवल पे आपकी स्क्रीन होनी चाहिए, योर बैक शुड बी स्ट्रेट, योर रिस्ट शुड बी सपोर्टेड एंड योर फीट शुड बी सपोर्टेड ऑन अ चेयर. इसमें चेयर की हाइट भी है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वी शुड कीप आवर बैक ऑलवेज स्ट्रेट. स्लाउच वाली झुकी हुई पोजीशन वी शुड ऑलवेज अवॉइड. बहुत ही आजकल यूजुअली वी सी 9 to 5 के जॉब्स में पीपल आर कीपिंग ऑन सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स डूइंग देयर वर्क. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब हम बहुत घंटों तक बैठ बैठ के काम करते हैं तो वही बैक के इश्यूज आ जाते हैं. तो बहुत एक आसान सी चीज है जो मैं सबको एडवाइस करती हूँ अपने सेटअप में. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू नीड टू टेक अ ब्रेक. यू नीड टू गेट अप एवरी 2 hours. उसमें कुछ खास ऐसी बड़ी चीज नहीं करनी है, आप थोड़ा उठ जाएं, थोड़ा सा घूम लें. एंड ब्रेक डजंट मीन अच्छा लैपटॉप छोड़ दिया तो फोन में लग गए, सोशल मीडिया में लग गए. दैट्स नॉट अ ब्रेक. ब्रेक का मतलब है यू गेट अप, मूव अराउंड फॉर 5 minutes, stretch yourself and then get back to work. This is what exactly the break is all about. तो इसमें कौन कौन से स्ट्रेचेस हम कर सकते हैं? ट्राइसेप्स है, ओवरहेड रीच है, अपर बॉडी आर्म स्ट्रेचेस हैं, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस है, नेक के स्ट्रेचेस हैं. तो ये बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हैं जो 5 मिनट में आप कर सकते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रेचेस यू आर सीइंग. लिविंग ऑन अ प्रेयर, हैंड जॉइन करके अप, सॉरी, हैंड जॉइन करके अप एंड डाउन है. मूव योर हैंड, स्ट्रेच योरसेल्फ, मूव योर बैक टू साइड्स, रोटेट योरसेल्फ. ये बेसिक छोटे छोटे स्ट्रेचेस हैं जो आप कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता रहेगा. ये कुछ और ऑफिस स्ट्रेचेस है जो इसमें देखिए, हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच है. तो ये सिंपल स्ट्रेचेस हैं आपके मसल्स के लिए, जो आपके मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और जो स्ट्रेन कॉन्स्टेंटली उन पे पड़ता रहता है उससे उसे रिलीव करते हैं. ना ये तो हो गई अब तक की फिजियोथेरेपी में क्या चलता आ रहा था, मोडालिटीज यूज होती हैं, एक्सरसाइज यूज होती है. बट नाउ इन दीज मॉडर्न डेज विद द एडवांसमेंट बहुत सारी नई चीजें आ गई टेक्नोलॉजिकली जो फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट में ऐड हो गई हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर आर गेट स्कैनर्स, देयर इज यूज ऑफ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, 3D रनिंग एनालिसिस, वर्चुअल रियलिटी इज ऑल्सो देयर, टेलीथेरेपी ही इज ऑल्सो देयर. अभी जो हमारा रिसेंट कोरोना टाइम में जो हमने पैंडेमिक का इतना खराब समय देखा, उसमें द टेलीमेडिसिन वाला जो पार्ट हुआ है उसमें टेली थेरेपी का भी पार्ट ऐड हुआ है, जहां पर वी टेल पीपल अबाउट हाउ शुड दे डू देयर एक्सरसाइजेस, पोस्चर केयर और वो सारा हम थ्रू टेली थेरेपी उनको सिखाते हैं. इलेक्ट्रोमायोग्राफी फीडबैक एंड मशीन्स हैं, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स हैं. तो ऑल दीज जो मोडालिटीज और ये एडवांसमेंट हैं, दीज आर यूज्ड फॉर अभी बेटरमेंट ऑफ ये ट्रीटमेंट जो फिजियोथेरेपी का हम आजकल चलते हैं. तो फिजियोथेरेपी प्लेज एन इंटेग्रल रोल इन फॉस्टरिंग ओवरऑल वेलनेस बाय प्रमोटिंग एन एक्टिव लाइफस्टाइल. फिजियोथेरेपी इज नॉट जस्ट अ थेरेपी. अब क्या है, जहां प्रिवेंशन की बात आती है वहां वही आपको करना है कि आपको अपना जो लाइफस्टाइल है उसको पहले से ही एक्टिव रखना है, क्योंकि हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल आजकल फॉलो करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी ना किसी फॉर्म में हम फिजिकल एक्टिविटी अपने डेली रूटीन में ऐड करें. एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको किस तरह से पसंद है. आप चाहें तो वॉक कर सकते हैं, यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक फॉर 30 minutes डेली. You can go for cycling, you can do running, you can do any kind of exercise, you can do gymming, you can do swimming, whatever you like, but at least 30 minutes of physical activity, workout kind of, is very important for everyday normal आपकी fitness. So as you navigate your health journey, remember that physiotherapy is a powerful ally that can guide you and support you on your every step. It's your journey, your health, your life. Empower it with physiotherapy. Thank you so much. Have a great day ahead and a very happy Doctor's Day to all of you. Thank you. Thank you so much, Chandni ma'am, for such an enlightening lecture. And it's a, introspection for all of us. What are we doing in our day-to life? How much are we sitting? How much we need to exercise? So it's a good reminder that you have given to us. Thank you so much. Now I'd like to invite Dr. H.K. Chaturvedi. He's a scientist and director at NIMS ICMR, and he'll be talking about evidence and research. गुड मॉर्निंग यू ऑल. और डॉक्टर्स डे के लिए सभी डॉक्टरों के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ. इनफैक्ट कहते हैं ना कि एक समय है जो कि आदमी को कुछ चीज़ें भूलने नहीं देता है, और जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं उसमें सबको पता है कि गॉड के बाद यदि कोई है तो दूसरा डॉक्टर ही है.
सर्वप्रथम तो मैं CSR रिसर्च फाउंडेशन और ऑर्गेनाइजिंग टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और डॉक्टर परवेज़ मेहरा जी, जो कि इनफैक्ट मैं 1-2 दिन पहले ही उनसे मिला था, वो किसी कारणवश मेरे यहाँ आए थे और उन्हीं बात 2-3 उनसे जो उस दिन मुलाकात हुई और पहले भी एक आध बार मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे जो है कहा कि नहीं, 2 दिन पहले मुझे कहा कि नहीं आप आइए, यहाँ पर जो है हम लोग एक आयोजन कर रहे हैं। और वहाँ मुझे कहा गया कि आप ओपन कुछ भी कहना चाहें, क्योंकि मैं तो रिसर्च के लिए हम लोग कमिटेड हैं। हम लोग जनरली जब कुछ बताते हैं तो स्लाइड्स होता है, टेक्निकल चीज़ें होती हैं और उसी के दायरे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुझे जैसा लगा कि कुछ खुलकर बात की जाए कि रिसर्च और रिसर्च, डॉक्टर, रिसर्चर और पब्लिक और पेशेंट जिनके बीच में आप सब रहते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है, कैसे ये चलता है। हमारा रिसर्चर का रिश्ता जो है वो बहुत ही गहरा है, इवन डॉक्टरों से भी और एज वेल एज पेशेंट से भी। कहीं न कहीं हम जो काम करते हैं वो देखा जाए तो ये आम लोगों के लिए ही रिसर्च करते हैं, हम अपने लिए रिसर्च नहीं करते हैं। हमारा रिसर्च वहाँ तक जायज़ है जहाँ तक कि वो फैसिलिटेट करता हो, पहुँचता हो किसी कॉमन मैन के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही सिमिलर हैं। हम लोग सब कहें तो उस लाइन में सब रिसर्चर हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ICMR ही रिसर्च कर रहा है, इसके अलावा भी बाहर जो लोग हैं रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर्स के पास जो है कोई बहुत उनको दायित्व तो नहीं है कि आपको रिसर्च करना है, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर्स ही इनकाउंटर करता है पेशेंट्स का। प्रॉब्लम्स जो आइडेंटिफाई करता है वो डॉक्टर करता है। देन ही लुक्स एट कि डायग्नोसिस क्या करना है, कैसे करना है, एंड देन ही लुक्स फॉर कि यदि ये डायग्नोसिस करें तो वो बेटर होगा या कोई दूसरा बेटर होगा। देन ही सर्च कि व्हाट इज द नॉलेज available, and that knowledge is nothing but you can have a gamut of information from the research. रिसर्च का एक अलग भंडार है जहां बहुत सारी चीजें हैं। आप कितना अप टू डेट हैं, कितना कुछ आपके पास पता है उस फील्ड में, दैट वे यू कैन टेक ए बेटर डिसीजन। तो मैं कहूँगा कि सारा कुछ जो हम लोग कर रहे हैं एक तरह से केवल डॉक्टर के लिए कर रहे हैं, केवल उन्हीं के लिए है, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इवन जो कॉमन मैन है, कॉमन पब्लिक है, उनको भी जानना चाहिए। जैसे अभी कोविड के दौर में हम लोग को बहुत कुछ सिखाया है कि हम लोग यदि चाहें तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यदि हम अपने आप को बचाना चाहें, बीमारी से दूर रखना चाहें, तो उसके भी मैसेज या उसके भी इंफॉर्मेशंस यदि प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाए, लोगों को मालूम हो, तो वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो वो जो जनरेट हुआ इंफॉर्मेशन कोविड के टाइम में कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, एनिमल तो है नहीं कि यू कैन बांध करके आप रख दें उसको, आदमी तो कम्युनिकेट करेगा, आदमी तो घूमेगा, वो जाएगा, इंटरेक्ट करेगा। लेकिन कंडीशन कुछ ऐसा था, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि आपको यदि बचाना है अपने आप को, तो कम से कम इंटरेक्ट, कहीं बिल्कुल कंपलसरी हो तभी जाए, नहीं तो बाहर नहीं जाए। These are all knowledge gathered by the scientific evaluation या scientific process, जो कि बहुत कम समय में ये सब जो है तय किया गया कि वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिजीज इन द कम्युनिटी वो कैसे हो रहा है और कितनी दूरी होनी चाहिए। दूरी तो होनी चाहिए, लेकिन कितनी दूरी होनी चाहिए। अच्छा, ये डिजीज फैल तो रहा है, किस वजह से फैल रहा है? क्या टच करने से फैल रहा है, बाय एयर फैल रहा है, किस वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिजीज क्या है? So all these things is part of what evidence we have. So when we take some decision, basically we collect the evidence, and evidence is nothing but a scientific way of collection of data, and that's what all researchers are doing. Either it is in medical science, or agriculture science, or in biological science, any science, it is nothing but you are deriving the information, and then you are taking some decision out of that.
So that way, I will say that in medicine, our responsibility is much more because we deal with the patient's, human's life. It is not animal's life. Animals में तो कहते हैं कि ठीक है, sacrifice हो गया, कोई बात नहीं है. What knowledge we have gained that we can use further. But in case of human being, when we are dealing with patients, human being, we cannot say that okay, let it go. It is not like that. Once a patient is lost their life, even the doctor him so good, but even then he will feel that there is something wrong possibly happened from my side also. So that way we are bound to work with several limitations, and that's the reason even researchers has their own line of doing the research when they deal with the any drug development or any medicine development or therapy development or technique development. They used to follow certain guidelines, and those guidelines are basically done in such a way so that lesser harm should be made to the patients, lesser harm should be made to the actual जिसके लिए हम दवा बना रहे हैं उनको कम से कम harm हो. And once you derive the knowledge from that experiment, and then you ask that now this is the knowledge, and you say that this is the guideline of ICMR or ministry or health department that has to be followed by others. So what does it indicate? The guideline also which is followed is not like you can straightway go and use it, because those guidelines are prepared for the way it was guided in a standard protocol and all. So, but when you deal with the patient, there you cannot say that I don't know the guideline what ICMR has followed, whether I have to use this medicine to you or not, because you are not coming in that periphery. So the patient's job is, doctor's job is much more complicated when he has to deal with the patients. He cannot say, though this drug is better, but possibly I have to see the guideline, then only I can advise you. So a sort of balancing sort of things where even a drug is not prescribed to a specific group of people, a specific situation or conditions. Doctor generates some information and some logics, and with that he try to heal the patients. So though it is you can say that that is also a part of research only. The information which is generated by doctor, it is much more important than what information generated in the lab or in the control conditions. But the issue is the scientific research they used to publish in high standard journals, and their language and all you have seen, it is very technical, and many times people will not understand what exactly with all this design method, the way it is, how it is not that simple to understand whether I can use it or not in given situation. So somewhere what I feel that our though the scientific research is published in a very high standard journal because of good quality of research, but the good quality of research can be proven only if it is applicable to the common people, common patients. So that way we have to, somewhere there should be a balance that all the scientific information could be brought in such a way and in a common platform where doctors can easily read and understand what for this. And it can be because you don't have so much time to understand the entire nitty-gritty of the research paper. But of course, if somebody can provide you in a limited, simple language, possibly for you to find out 10 or 15 minutes time to go through that, if you are in that profession, that will fill up a big gap what we think that it is existing. Another side, what I think that there are several issues related with public health. Nowadays, we experience there is a lot of rush in all the hospitals. COVID is over, but even then, people are in the queue in your hospital. The reason being, there is no primary prevention of the treatment. At that level where the people should have been made aware that what precaution could be taken when you are at home, you are having little bit of pain or little bit of some problem, then possibly he could have cured at early stage itself. But that doesn't happen. And the disease
when it is getting increased or a high level, when it is intolerable and condition and all, they rush to the hospital. And that's the reason day by day you are seeing that the patients load in every hospital, at least in Delhi, what I have seen that it is increasing. It is not only AIMS, I have heard that in all hospitals. So somewhere what I feel that what work has to be done, it is not only in research, not only at increasing the doctors, making hospitals and buildings and all that. There is need to work at the at the down level, from where the peoples are coming for the treatment. That means all this knowledge somewhere has to be made in such a way so that it can reach to the people who can really get benefit out of that. And that's what is lacking. In fact, we are still in public health point of view, though we have done enough research, derived many knowledge, many information, but still it is not reaching to the people. That is a best part of this, that we have to work on that line. In fact, we have to start thinking on that line. And that's why I thought that instead of talking a scientific presentation on evidence-based medicine and practice, I should talk with my general experience, what I have. Because research, I know that you have to follow the design, if you have to follow the guidelines, then you come out with the result. All these standards you have to follow. But all this standard doesn't work when you see the patient. A doctor has to think in different way. Their lab condition, their situation, their existing information, that may not be there at that level. So how he has to manage with in that situation, that is a great challenge for us. With that, I hope that I have just made you some light in your spark in your these things. So you all doctors should think on that line, and let us hope that we should all committed to our community, public, and do something for that. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Chaturvedi, on your insight regarding about evidence and research. Now I'd like to invite Dr. Rohit Sharma. He's ex-faculty at Department of Pathology at Safdarjung Hospital, and he'll be talking about the importance of pathology in integrating healthcare. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks, CSR Research Foundation, for organizing this program on National Doctors Day. First of all, I would like to thank Mr. Deen Dayal Agrawal, sir, for giving us this opportunity to speak on this platform. जैसा कि यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि आज CA डे भी है और यहाँ पर काफ़ी सारे CA हैं, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. I would like to talk about importance of pathology in integrating healthcare. What is integrating healthcare? Integrating healthcare is when we collaborate. Integration का हिंदी मीनिंग है एकीकरण. जब हम एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, योगिक साइंसेस, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करते हैं और एक मनुष्य की पीड़ा को खत्म करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर सिस्टम. हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस है, और वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे हिंदुस्तान से इस इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर को लेकर अपने यहाँ पर आज की डेट में
आयुर्वेदिक रिसर्च फाउंडेशन, होम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन, योगा आप देखेंगे तो अब इंटरनेशनल लेवल पर योगा डे मनाया जाने लग गया है. तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर इंडिया which took us to this level. Basically, I am a pathologist. I worked with various centers. मैंने अपनी MD जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल से की थी. उसके बाद आई वर्कड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑल्सो. तो वहां पर हमने क्या देखा, पैथोलॉजी से आप सब लोग क्या समझते हैं? पैथोलॉजी क्या है कि एक ऐसी ब्रांच है जो आपकी इन्वेस्टिगेशन करती है, जो जांच करती है. खून की जांच करनी है, पेशाब की जांच करनी है, मल की जांच करनी है, तो एक पैथोलॉजिस्ट दिमाग में आता है. बट पैथोलॉजी जो है वो एक क्लिनिशियन को, यहाँ पर बहुत सारे हमारे क्लिनिशियन भी बैठे हैं, डॉक्टर मयंक ऑर्थोपेडिशियन है, डॉक्टर काव्या एनेस्थीसिया में है, हमारे रिसर्चर भी हैं, डॉक्टर मेहरा जी हैं, वो दे ऑल नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी. व्हाट वी डू, वी गिव देम अ बेस्ट डायग्नोसिस. आप लोग एक डॉक्टर के पास कमर दर्द लेकर गए, पैरों में दर्द लेकर गए, बुखार लेकर गए, जुकाम लेकर गए, डॉक्टर साहब ने लिख दी जांचें. आपको नहीं पता वो जांच कौन कर रहा है, स्पेशली आज के टाइम में जहां पर एप्लीकेशन आ गया है. दिस न्यू एप्लीकेशन नेम्ड एज ऑरेंज, आप सबने उसका एडवर्टाइजमेंट सुना होगा मुझे लगता है. ऑरेंज एप्लीकेशन क्या करता है? वो कहता है कि आपको लैब में आने की जरूरत ही नहीं है ना. आप बस एक टेस्ट बुक करो, मिंत्रा की तरह आपका जो सैंपल है वो ऑर्डर की तरह कलेक्ट कर लिया जाएगा घर आके. आपको क्या पता उस लैब में कौन पैथोलॉजिस्ट है? आपको कैसे पता उस लैब में कौन सी मशीन रखी हुई है? बट हम लोग दे रहे हैं. 699 में हम अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करा लेते हैं, है ना. 699 में आज आप एक टी शर्ट भी नहीं खरीद सकते. अगर आप कनॉट प्लेस चले जाएं तो आप एक टी शर्ट भी नहीं खरीद पाओगे 699 में. और हम लोग यहाँ लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन सब करा लिया हमने 699 में. एक विटामिन डी की कॉस्ट एक लैब में 3,000 रुपए है, और वो विटामिन डी 1,000 रुपए में साथ में लगा के दे रहे हैं आपको, लिपिड प्रोफाइल के साथ, लिवर फंक्शन के साथ. तो पैथोलॉजी की इंपॉर्टेंस आज की डेट में एक आम जनता के पास होनी चाहिए. उसको ये पता होना चाहिए कि भाई मैंने जो जांच कराई है किस लैब से कराई है, वहां पर कोई डॉक्टर भी था, कोई पैथोलॉजिस्ट था जिसने मेरे ब्लड को देखा, या बस ब्लड ले लिया और सीधा बेसिन में डाल दिया. ऐसा तो नहीं हो गया मेरे खून के साथ. तो ये तो हो गई सिर्फ और सिर्फ ब्लड की इन्वेस्टिगेशन. आप में से कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने आसपास कैंसर भी देखते होंगे, है ना. आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके मित्रगण में कितने सारे लोगों को ऐसा मिला होगा, उन्होंने बताया होगा कि भाई हमारे को ना यहाँ पर कमर पे एक गांठ है, अब इस गांठ का क्या करें, इसे निकलवाएं या रखे रखें. पहले तो आयुर्वेद वाले डॉक्टर के पास पहुंचे, होम्योपैथ वालों के पास पहुंचे, बाकी लोगों के पास पहुंचे. पहले तो सबसे पहली जो इंसान पहुंचता है वो अपने मित्रगण में पहुंचता है, अपने फ्रेंड को बताता है. फैमिली को बताए ना बताए, अपना एक क्लोज फ्रेंड होता है उसको बता देता है कि मेरे को यहाँ पर एक छोटी सी गांठ है. उसका डायग्नोसिस जो क्लिनिशियन को देगा वो भी एक पैथोलॉजिस्ट ही देता है. तो बेसिकली पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मतलब है, पैथो मतलब सफरिंग, वट एवर पीड़ा यू आर हैविंग, जो भी कष्ट आपके जीवन में है उसकी स्टडी को पैथोलॉजी बोला जाता है. और ये पैथो जो वर्ड है ये सिर्फ एलोपैथी में नहीं है, एलोपैथी वहां पर भी पैथी है, होम्योपैथी उसमें भी पैथी है, नेचुरोपैथी उसमें भी पैथी है. तो ये पैथो जो वर्ड है ये सब जगह है. दैट इज वाई पैथोलॉजी इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रेशन हेल्थ केयर. हम आयुर्वेद वालों को भी पढ़ाते हैं, हम होम्योपैथ वालों को भी ये पैथोलॉजी पढ़ाते हैं, और हम योगा और नेचुरोपैथी और योगिक साइंसेस वालों को भी ये पैथोलॉजी पढ़ाई जाती है. तो दैट इज वाई पैथोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड in the world of healthcare. Secondly, as I told you guys that we give the definitive diagnosis to the clinicians. Now, what is integrative healthcare? That I have already described you all कि जहां हम एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सबको खड़ा कर दें. इसमें मैं हमारे आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से,
कि उन्होंने आयुष नाम से ये जो योजना चलाई और उसको उन्होंने एक एक अस्पताल में लाकर रखा, उसकी वजह से एक आम जनता वाला, जैसे कि हमारे डॉक्टर काव्या गोयल ने बताया आप सब लोगों को कि आज आपको दर्द है और दर्द का आप इलाज कराने हॉस्पिटल पहुंच गए। सपोज मेरे सफदरजंग हॉस्पिटल में तो लाखों लोग आते हैं, है ना, डेली की ओपीडी पता नहीं कितनी है। वहां पर इंसान आया, उसने कहा डॉक्टर साहब कमर में दर्द है, महीना भर दवाई भी खा ली, ठीक ही नहीं हो रहा। उन्होंने एमआरआई भी करा लिया, सीटी स्कैन भी करा लिया, उसमें पता लगा जी डिस्क जो है वो हिली हुई है। अब डिस्क हिली हुई है, बट आज की डेट में जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आयुष क्लिनिक हर अस्पताल में मौजूद है। आपके पास एलोपैथी नहीं, आपके पास आयुर्वेद भी है, आपके पास होम्योपैथ भी है। आप जाते हैं तुरंत वहां पे ओपीडी का पर्चा कटवा के उनको दिखा लेते हैं। असली मकसद क्या है? निवारण, आप लोगों की पीड़ा का निवारण, दैट इज इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर। तो दैट इज वाई इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर तो हमारे हिंदुस्तान में पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा है। और उससे भी पुराना अगर आप जाएंगे, पुराने बिलीफ्स तो कितने बड़े बड़े ऐसे ऐसे बिलीफ्स थे हमारे एंशिएंट बिलीफ्स में हम जाएं तो बहुत सारी थ्योरी डिस्क्राइब करी गई कि किसी को बीमारी हुई कैसे, उसके रिगार्डिंग कितनी सारी थ्योरीज पुराने जमाने में चली आई। सबसे पहली थी थ्योरी ऑफ मिस्टिकल कॉसेशन। मेरा तो भाग्य ही खराब ये बीमारी जो है मेरे ही लगती है ना। मैं कुछ भी खा लूं पता नहीं पेट क्यों खराब रहता है, पानी भी पी लूं तो भी मोटी हो जाती हूँ, समझ ही नहीं आ रहा, भाग्य ही है कुछ। तो ये जो भाग्य की गाथा जो हम उस जमाने में गाते थे, ये आज भी गाई रही है दुनिया, है ना। उसके बाद थ्योरी ऑफ एमनिस्टिक कॉजेशन आई। उसने बोला आत्मा चढ़ गई है इसके ऊपर कुछ ना कुछ, है ना, इसकी आत्मा जो है वो किसी और की आत्मा इसके ऊपर आ गई है। तो वो भी लोगों ने बताया एंशिएंट बिलीफ्स में। थर्डली थ्योरी ऑफ मैजिकल कॉजेशन, बंगाल में बड़ा फेमस हुआ, जादू टोना काला मंत्र बहुत फेमस हुआ। तो ये सारी थ्योरीज को डिस्कार्ड करने का जो काम किया वो सिर्फ हिंदुस्तान के हेल्थ केयर ने किया। आयुर्वेद आया, होम्योपैथ आया, उन्होंने ये बात बताई। हमारे यहाँ पे शायद होम्योपैथ के भी बैठे हैं, शायद कोई ना कोई, दीनदयाल सर ने हमें बताया था कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है कोई होम्योपैथ से, तो वो भी इस बात को समझ पाएंगे कि हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम, इंडियन मेडिकल सिस्टम, हम इस लेवल पर पहुंच पाए कि ये किसी आत्मा, ये किसी जंजाल का काम नहीं है। ये काम जो है वो आयुर्वेद ने त्रिदोष थ्योरी देकर ये समझाया कि वात पित्त कफ, जब इन तीन चीजों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ आएगी तब इंसान और मनुष्य के अंदर डिजीज पैदा होगी, सिम्टम पैदा होंगे। बट कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि फर्दर रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत थी हर फील्ड को, आयुर्वेद को भी, होम्योपैथ को भी, योगिक साइंसेस को भी फर्दर रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फर्दर रिसर्च करी एलोपैथी ने, मैं आपको सही बताऊं तो फर्दर रिसर्च करी एलोपैथी ने। कैसे करी? कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई सन 1590 में। जब माइक्रोस्कोप आया, सन 1590 में जब माइक्रोस्कोप आया तो हम सबको ये बात पता लगी, जिसको साइंस की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है उस इंसान को ये बात पता लगी कि हमारी बॉडी बनी है कोशिका से, हमारी बॉडी बनी है सेल से। दिस सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो वो बात बताई इस माइक्रोस्कोप ने। जब हमने अपनी स्किन को काट के किसी, बचपन में हम 12th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करते थे कि प्याज के उसको छिलके को निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखते थे सेल क्या चीज है। तो वो सब चीजें माइक्रोस्कोप के आने के बाद शुरू हुई। जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ दिस माइक्रोस्कोप, डिस्कवरी ऑफ सेल हैपेंड, एंड देन फर्दर इवोल्यूशन इन आवर मेडिसिन एंड एलोपैथी स्टार्टेड टू हैपन। और तब कहीं जाकर आज हम जहां खड़े हैं वो एक हमारा भाग्य कह लीजिए, वापस से मैं कहूँगा उसी थ्योरी में मैं चला गया हूँ। हमारा बहुत अच्छा भाग्य की बात है कि आज हम हिंदुस्तान में हैं और हम आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, इन सबको मिला के एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन बना सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिस्कवरीज, एंड डेफिनेटली थैंक्स टू आर ICMR एंड रिसर्च फाउंडेशन ग्रुप एज वेल, जिन्होंने हमें यहाँ तक लाकर खड़ा किया फर्दर रिसर्चेस से। सो एज फार एज पैथोलॉजी मैंने बताया, तो पैथोलॉजी को बैकबोन जरूर बोला जाता है। वी हैव various investigations, we have blood investigation in the world of pathology, we have urine examination, stool examination is there,
फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जो मैं आप सबको बता रहा था, we welcome Dr. Sarkar. Thanks for being here, sir. So we have various investigations in the world of pathology. We have urine examination, we have fine needle aspiration cytology. Whenever you guys, जब भी आप लोगों में से किसी को अगली बार कभी भी कोई भी गांठ महसूस हो अपने शरीर के अंदर, तो आप एक इन्वेस्टिगेशन अपने माइंड में रखें। बीइंग अ पैथोलॉजिस्ट, मैं आज इस मंच से आप सबको इस बात के लिए अवेयर करना चाहता हूं कि आप इस इन्वेस्टिगेशन को जरूर ध्यान में रखें, जिसका नाम है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, उस गांठ में से एक नीडल के थ्रू जाकर कुछ मटेरियल निकालते हैं। उस मटेरियल की जांच करी जाती है कि वो गांठ जो है वो कैंसर की गांठ है या किसी कीटाणु से बनी हुई वो इन्फेक्शन की गांठ है। कैंसर भी दो प्रकार का होता है, उसकी जांच कराना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई डॉक्टर कहते हैं भाई इस गांठ को भी रखे रखो, कोई बात नहीं, या आप लाइफ लॉन्ग भी चला लोगे, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो दोज कैंसर आर नोन एज बिनाइन, बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं उसको। फर्दर बेनिफिट्स क्या है पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के? आज हम इलाज अपना कहीं भी कराएं, किसी भी डॉक्टर से कराएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एलोपैथ के पास आए, मैं नहीं कहता कि आप आयुर्वेद के पास जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, बट डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वाई? बिकॉज इन्वेस्टिगेशन इस बात को डॉक्यूमेंट करती है, इन्वेस्टिगेशन इस बात को डॉक्यूमेंट करती है कि हाँ आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कि हाँ आपका जो ब्लड शुगर है वो बढ़ा हुआ है। इवन रिसर्च फाउंडेशंस जितनी भी हैं वो भी इन्वेस्टिगेशंस में ही बिलीव करती हैं। यहाँ पर कितने लोग ऐसे होंगे हमारे यहाँ बीच में जिन लोगों को डायबिटीज का लिटरल मीनिंग पता है कि डायबिटीज है क्या? हम में से 10%, 20% लोगों को, इवन 90% लोगों को पता है कि डायबिटीज जो है वो एक बीमारी है, बट डायबिटीज की डेफिनेशन जो हम साइंस में लिखते हैं उसके लिए इन्वेस्टिगेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो है, एक जांच होती है HbA1c, है ना, 3 महीने की शुगर, जिसको हम सरल भाषा में बोल देते हैं कि 3 महीने की शुगर, दैट इज नोन एज HbA1c। अब ये HbA1c जिस भी इंसान का 6.5 से ज्यादा होगा, माइंड इट, 6.5 से ज्यादा HbA1c इज डायबिटिक। तो दैट्स वेयर पैथोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक कहते हैं ना चीज को पुख्ता करना, पैथोलॉजी उस चीज को पुख्ता करती है कि हाँ 6.5 से ज्यादा है तो ये इंसान डायबिटिक है, इसकी डायबिटीज की दवाई आप चालू करो। अगर 6.5 से नीचे है तो उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताओ कि नहीं जी आप एक काम करो, वजन कम करो, आप 10 किलो वजन कम करोगे तो उससे आपका जो डायबिटीज है वो ठीक हो जाएगा, शुगर लेवल कम हो जाएगा। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी है HbA1c का 6.5 से ज्यादा होना। तो आगे कभी भी आपको लगे ग्लूकोज और शुगर, हम कराने चले जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास कि जी शुगर करा लेते हैं, कोशिश करें हर 3 महीने में HbA1c कराने का। स्पेशली 40 के बाद, 50 के बाद अपना HbA1c हर 3 महीने में, 6 महीने में कराते रहिए। सो इस्टेब्लिशिंग द डायग्नोसिस, उस डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश करना इज द मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पैथोलॉजी। सेकेंडली, डिफाइन द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, दैट माय कलीग्स विल डेफिनेटली टेल यू गाइस कि भाई बिना पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के तो ये भी ट्रीटमेंट चालू नहीं कर सकते। तो दैट्स वेयर पैथोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में आता है कि आपका HbA1c या ब्लड शुगर अगर ज्यादा है तो कितनी दवाई खानी है। किसी का थायराइड बढ़ा हुआ है, उसने कहा जी मेरा थायराइड की बीमारी है, आपका थायराइड जो है प्रोफाइल वो गड़बड़ है, TSH जो है लो हो गया। अब कितनी मॉनिटरिंग उसकी करनी है, कितने टाइम पर 0.5 mg खानी है और कितने टाइम पर 0.25 mg खानी है, दैट्स वेयर दिस पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्प्स इन मेडिको लीगल केसेस। मेडिको लीगल केसेस क्या है कि आप कहीं से भी इलाज कराने गए, आप इस बात को कभी भी कहीं भी किसी के सामने ये बात प्रूव कर सकते हो कि मेरा इलाज गलत हुआ। जब तक आपके पास वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है तो आपको कहां से पता लगेगा कि आपका इलाज गलत हुआ। तो इवन आयुर्वेद, होम्योपैथ, योगिक साइंसेज, एलोपैथ, दैट्स वेयर पैथोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल मेडिको लीगल केसेस में। अगर यहाँ पे कोई लॉयर है तो इस बात को बड़े अच्छे से समझ सकता है
कि जब तक आपके पास रिपोर्ट नहीं है आप इस बात को प्रूव नहीं कर सकते कि डॉक्टर साहब ने मेरा तो ऑपरेशन कर दिया था जी, है ना, ऑपरेशन में ये चीज निकली। रिपोर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो दैट आई सबमिट पेशेंट सेटिस्फेक्शन फॉर श्योर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। हमारे ये मरीज हैं, इन मरीज को छाती में दर्द हुआ, मरीज पहुंचे डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब ने बस देख के बोल दिया कि नहीं जी इनको जो है वो हार्ट अटैक हुआ है। कैसे पता लगा हार्ट अटैक हुआ है? उसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो हम कराएंगे ऐसे केसेस में वो कराते हैं ईसीजी, बिकॉज हर उल्टी तरफ दर्द दिल का दर्द नहीं होता है ना, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पर दर्द हो रहा है और ऐसे करके दर्द हो रहा है तो वो हार्ट अटैक का ही दर्द हो। बहुत सारे और भी कारण हैं। दैट्स वेयर इन्वेस्टिगेशंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, अपनी इन्वेस्टिगेशन कराने में बिल्कुल कोताही ना बरतें। बिल्कुल ये ना सोचे कि यार ये मेरी 2 जांचें फालतू लिख रहा है, 2 जांचें आप उससे फालतू लिखवा लीजिए बोल के, तो डॉक्टर साहब एक काम करिए मेरी ये भी लिख दीजिए। आपको तो पता लग जाएगा कम से कम कि भाई मुझे है या नहीं। उसमें लिखा होता है, आजकल तो बोल्ड कर देते हैं, अगर ऊपर नीचे होती है बोल्ड कर देते हैं, आप भी उस पर आगे बात कर पाओगे कि जी मेरी ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये बोल्ड क्यों हो रखी है, इसका क्या मतलब है, पूछ पाओगे। तो दैट्स वेयर पेशेंट सेटिस्फेक्शन कम्स। एट द एंड मैं फिर से एक बार अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा आयुष क्लिनिक चलाने के लिए सारे अस्पतालों में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर रोहित। मैंने डॉक्टर रोहित जी से पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि कहीं ना कहीं पैथोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे हम वो होम्योपैथी के डॉक्टर हों चाहे हम यूनानी हों, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाएगी तो इलाज कैसे होगा। मुझे लगता है कि जो उन्होंने बोला है उससे आप लोग सब लाभान्वित होंगे, और आशा है कि इस कार्यक्रम को हमने बहुत जल्दी डिजाइन किया था तो बहुत सारी ये कमियां रह गई होंगी। अगले प्रोग्राम में हम इन सब को दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी हमारे बीच में डॉक्टर सुभाष सरकार जी हैं, आप शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार में हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी साहब को हमने याद किया है तो साहब ने हमेशा हमें अपना मार्गदर्शन दिया है, हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है। इस बार भी इस डॉक्टर डे पे आके उन्होंने हमारा बड़ा मतलब कहते नहीं, हमारी संस्था का बड़ा मतलब सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार जी से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए, और सर आइए प्लीज, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस जो सेशन है इसमें एक ही स्पीकर रह गए हैं अभी, डॉक्टर मंदरा मेहरा जी। तो मैं डॉक्टर सुभाष सरकार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो इजाज़त दें तो उनका एक 5-7 मिनट का टॉपिक है वो कर रहे हैं। और डॉक्टर सूरज मंडल जी हमारे बड़े भाई हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सूरज मंडल जी आप आइए मंच पे। तो may I request Mandra Mehra ji ki please come for a heart delivery.
So, good afternoon, all of you, and a very warm welcome. I'd like to thank the CSR Foundation for giving me this platform to speak on oral health and systemic health and how both are interrelated, and the importance of oral health on this Doctor's Day. And wishing you all a very happy Doctor's Day. So, as you can see in this slide, this is a system. A system works when all the parts work together and are integrated. They have a coordination among them, and that's how a system works, whether it's a watch, whether it's our human body, or even our mouth. So, health, as we know, is a state of complete physical, mental, social well being, and not merely the absence of disease. So, likewise, a person cannot be healthy if you do not have good oral health, because oral health is very essential to our general health and to our quality of life. So, oral health is a state of being free from any periodontal disease, a tooth decay, a tooth loss, any mouth or facial pain, oral and throat cancer, oral infection and sores, and other diseases and disorders which limit an individual's capacity in biting, chewing, smiling, speaking, and our psychological well being. So, according to WHO, this is the definition of oral health, like I explained to you. Next. Now, why is oral health important? Now, if you see these series of pics, there will be something which is stalking, and सबसे पहले आपकी attention वहीं पे जाएगी. Next. इन सब में आप देखें तो our faces are fortune, like they say, and the first look or impression we get is when we see somebody's face or their smile. So there is some defect in somebody's teeth in all these slides. But more than that, there are some other defects also in these pics. Can anybody identify? Like in this pic or in this one? So in this pic, the hand behind the gentleman's shoulder is not of the lady, but that is not so much in the forefront. We see the smile of the gentleman and how there is a defect in the teeth. In the second one, there's an extra digit in the hand of the lady, but again, our first attention comes onto the smile of the gentleman. And in the last pic, there is one ear which is missing in the gentleman's face, but again, it's the smile which catches our attention. So that's why oral health is not only important for our appearance, but also in our day-to-day life and its functions. So these are the basic functions of the various components in our mouth. The teeth, they help us in chewing, they help us in talking. And if oral health is not there, if we suffer from pain, it can affect our life, be it any age group, whether it's a student, it can cause poor school performance for children, or in case of adults, there can be a loss of work. We have to absent ourselves from work. And dental decay and tooth loss can affect our aesthetics, also cause self-image issues. It can result in speech problems. So oral health is also related to our general health, because the mouth is the gateway to the body. We say that the mouth is the mirror of our body. Whatever one sees in the mouth, it reflects how our systemic health is dependent on that. Now, there are certain common dental diseases and conditions which affect our general health. So, as proven by the WHO, about 60 to 90% of the school children suffer from dental caries or cavities. And 15 to 20% of the middle-aged group suffer from severe gum disease or a periodontal disease. About 30% of the people between the age group of 65 to 74 have no natural teeth. They are edentulous. Now, these are a few risk factors which are affecting the dental and the oral diseases. First is the consumption of tobacco, be it any form. That leads to development of gum disease as well as oral cancer. Then poor oral hygiene, or mouth which is not
well kept or we don't take care of the hygiene, it's a source of all kind of systemic infections. Then our diet, it's an important factor which can lead to a lot of dental diseases if we consume a lot of sugary and sticky foods. Then lastly, hormonal changes in women and adolescents, they make the gums more sensitive and more prone to gingivitis. Now, few high risk factors like diabetes and immunocompromising conditions are people with diabetes or with immunocompromised state, they are at a higher risk of having dental diseases. Then certain medications which cut down on the saliva flow in our mouth, they also increase the risk of dental diseases. Like certain anti-epileptic medications, they are known to cause gum swelling or gingivitis. And lastly is genetic susceptibility. That is, some people are more prone to gum disease than others. So here this table shows the risk factors, the non-communicable diseases, and the conditions which can promote the oral diseases. Like in the risk factors, you have the non-communicable diseases, you have cardiovascular disease, diabetes, cancer, and chronic respiratory disease. Then mental disorders and injuries are conditions which are again risk factors. And physical inactivity, unhealthy diets, tobacco, and harmful use of alcohol all lead to increased incidence of dental diseases. This figure shows the stages of tooth decay. पेशेंट आता है, अरे कल तक मेरा दांत ठीक था, आज इतनी तेज दर्द हो रही है. But behind this sentence, there is this long story which starts from the caries in the first layer, that is the enamel, followed by extension into the dentine, then into the pulp, and lastly, when pain starts happening, then it's the stage of periodontitis or pulpitis, and that is when the patient comes to us. So what increases the likelihood of tooth decay? There are various factors in adults and children that include high bacterial counts, or it could be family history. When we say family history, it's not that it is so much in our genes. It's also about the dietary habits which are carried forward from one generation to the other. So, and then about inadequate fluoride, low saliva or a dry mouth, which can result from a lot of prescription drugs. And in the lower socioeconomic strata, where not much emphasis has been laid on taking care of oral hygiene. Then aging, disease, and other things can contribute to risk for tooth decay in adults. So how we can avoid getting cavities is by taking care of what we eat and drink, avoiding carbonated drinks or high sugar foods, and avoiding snacking all day, and then brushing regularly morning and especially at night. Then as part of treatment modality or part of a prevention for dental sealants, we have to visit a dentist because they apply sealants onto our molars, preventing tooth decay. Now, this is early childhood caries. One can see most commonly in our country, not much awareness is there regarding bottle feeding. Children are fed the bottle and the bottle is not taken out at night. And this results in this rampant childhood caries. What increases the risk of gum disease is smoking or hormonal changes in girls and women, diabetes, and other illness like AIDS. Dental fluorosis is a condition which is caused because of increased amounts of fluoride in the water that we drink. There can be different causes like direct, indirect, and distant. This is how dental fluorosis looks like. Then oral manifestations of systemic disease. As I had earlier told you that the mouth is our mirror of systemic health, and almost half of the people who are suffering from various diseases, whether HIV, oral, fungal, bacterial, or viral infections, they often occur early in the course of the HIV infection, and their first visibility can even be seen in the mouth. Certain signs and symptoms which are manifested by prodromal signs are like in measles, you'll find the Koplik spots. In diabetes, there'll be severe periodontal or gum disease. In pregnancy, you'll find gingivitis or a pregnancy tumor in the mouth of the women. In a cardiovascular disease, a cardiovascular patient, you will find that they often suffer from gum disease or periodontal disease, and there is a strong interlink between periodontal disease and cardiovascular disease. Then in an HIV patient, you will also observe hairy leukoplakia. Then we come to orodental trauma, which also
affects our functions. In this, you can have a soft tissue injury in the form of a cut or an abrasion, or a hard tissue injury in the form of fracture of the jaws or teeth. These are the signs and symptoms of an oral dental trauma the patient comes to us with. Then we come to oral cancer, which is of a very high prevalence in India today. And this can affect any part of the oral tissue, including the lips, the gums, the teeth, the cheek lining. These are the congenital defects like cleft lip and palate, which can be treated. So lastly, we come to the role of the health worker in prevention and management of the oral and dental diseases. You have medical interventions in which there are various modalities of treatments. Non-medical interventions include oral health awareness or encouraging about proper hygiene and nutrition, and making oral healthcare more accessible and affordable to all. So these are the 5 takeaways of oral health, that it is connected to your general health. It can affect one's quality of life, that is our physical, social, and mental well-being. Tooth decay, which is a chronic issue, it can be prevented if we take care of our oral hygiene and our dietary habits. Prevention includes maintaining good oral hygiene and a healthy lifestyle habit. And we can support our community by providing oral health resources or increasing our oral health awareness. And lastly, this is this IVRS helpline, that is 1800112032. This is a toll-free number which gives us a lot of guidance regarding any kind of dental conditions and diseases. So I would recommend all of you to dial this number. 1800 is a toll-free number, 11 represents the code of Delhi, and 2032 is an interesting last 4-digit number because we have 20 milk teeth and 32 permanent teeth. So that is how this IVRS helpline number has been designed. So I'll encourage all of you to use this number and increase your awareness. For everything, you need not visit the dentist or come running to the hospital. There are a few queries which can be answered even while using this helpline sitting at home. So once again, thank you for being patient listeners to me, and wishing you all a happy Doctor's Day once again. Thank you. Thank you, Dr. Manda. Thank you very much for being chairing this session. I think this session is over. सर मैं कुछ चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर साहब बहन का सम्मान करें. नहीं, सम्मान तो एक दो मोमेंटो के रूप में, फिर आप उसमें ठीक है जी. तो मैं आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सुभाष सरकार जी कि प्लीज गिव एड्रेस. नहीं ठीक है. थैंक यू सर. सर मैं आई रिक्वेस्ट टू हैव ए वर्ड ऑफ विजडम. Happy Doctor's Day. All the doctors of different community have come here. Namaskar to all. On the dais, हमारे डॉक्टर दीनदयाल जी, दीनदयाल अग्रवाल जी, डॉक्टर मयंक डरल, हाँ नमस्कार करिए भाई. ताली तो बजना चाहिए ना. संख्या कम है लेकिन तालियों को गड़गड़ाहट होना चाहिए. डॉक्टर मंदिरा मेहरा, अभी just now she has completed her speech. Dr. Kabba Goel, who is the assistant professor of anesthesia, SGT Medical College. वो आदमी को बेहोश भी करते हैं
और होश में भी ले आते हैं। कोई बेहोश है तो उसको होश में लाएंगे, ठीक है ना मैडम? डॉक्टर H.K. चतुर्वेदी, who is also scientist, कहाँ है? हाँ, नमस्कार। डॉक्टर चांदनी मेहरा, नमस्कार, who is physiotherapist. And Dr. Rohit Sharma, छूट गए, और सूरज मंडल जी। मैं सोच रहे हैं कहां से शुरू करेंगे, क्या बताएंगे। तो विषय तो है इंटीग्रेटिंग हेल्थ केयर, इसके ऊपर थोड़ा बताएंगे। उसके बाद आज के दिन में जो डॉक्टर्स डे है, दिस इज डॉक्टर B.C. राय's बर्थडे, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी और उसी आधार से कैसे इंटीग्रेशन हो सकता है ये भी हम सोच सकते हैं। हमारे बीच से VP महावर जी, जो फॉर्मर डायरेक्टर, कहाँ है? हाँ भाई, एकदम ताली। और एकदम पीछे से बहुत काम करते हैं डॉक्टर प्रवेश मेहरा जी, डायरेक्टर प्रोफेसर ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज, all other dignitaries and gentlemen. Today, on the occasion of National Doctors' Day, I am happy to be present here at the National Conference, Integrating Healthcare, the Way Forward. I am glad to say that the CSR Foundation took the initiative to organize the conference, which will provide a platform for various systems of healthcare and a comprehensive, holistic, patient-centered approach to work towards a common goal. First of all, I would like to take the opportunity to wish all the hardworking and talented doctors a happy Doctor Day. The day is celebrated to honor the birth and death anniversary of the great physician and the second Chief Minister of West Bengal, Dr. Bidhan Chandra Rai, who was also awarded as Bharat Ratna. This day serves gratitude to all those who are aiding us selflessly in the time of need and tirelessly working for the health of their patients. I would also like to wish a very happy National Charter Accountant Day to all the hardworking CAs. Who are the CAs? Please raise your hand. Ah, good. I'm not CA. I asked you to raise that. It may be easy to get into chartered accountancy, but it is certainly very difficult to become one. Dear all, moving forward, let's talk about the contribution ancient India made to the world of education and medicine. From that, we can get some ideas. Bharat was known for its world class institutions such as Nalanda, Vikramshila, Takshashila, Vallavi, etc., where quality multidisciplinary teaching and research were common. These great institutions used to practice Vedas with science, mathematics, Ayurveda, literature, economics, engineering,
astronomy, human values, and what not. These institutions produced great scholars like today C.V. Raman, A.P.J. Abdul Kalam, like. Let us take the names: Charak, Shusruta, Aryabhatta, Barahumira, Bhaskaracharya, Brahmagupta, Chanakya, Panini, and Gargi, among numerous others who made seminal contributions to the growth of the knowledge in diverse fields like mathematics, astronomy, medical science, yoga, fine arts, surgery, civil engineering, etc. Let us take an example from Ayurveda. In Ayurveda, there are 8 divisions according to the patients treated and kinds of treatment offered. That was Kaya Chikitsha. Now this is known as general medicine. Bala Chikitsha. Now it is known as pediatrics. Graha Chikitsha. Now this is psychiatry. Urdhavanga Chikitsa, disease and treatment of ear, nose, throat, eyes, and head. Shalla Chikitsa, this is surgery. Damstra Chikitsa, that is toxicology. Jara Chikitsa, this is geriatrics. Vrisha Chikitsa, this is aphrodisiac therapy. The important treatises of Ayurveda, which are considered wisdom embodied and highly revered as the authority among the Ayurvedic physician, and Sustrata Sanghita, Charaka Sanghita, and Vela Sanghita. I would like to share that Charaka authored a foundational text, that is a Charaka Sanghita, on the ancient science of Ayurveda, referred to as the father of Indian medicine. Charaka was the first physician to present the concept of digestion, metabolism, and immunity in his book at that time. Think about Charaka's ancient manual on preventive medicine remained a standard work on the subject for the 2 millennia and was translated into many foreign languages, including Arabic and Latin. Dear friends, the Sushruta Sanghita is considered to be one of the most comprehensive textbook of ancient medicines and surgery. Dear all, now we all shall discuss the chapters from this book that treats ear and hearing related issues. In the chapter Karnagata Roga Pratishedhaka Shamanyam Karnarogeshu Ghripapanam Rashayanam Abhyamo Shira Snanam Brahmacharyo Katathamnam Brahmacharya Katathanam. This means general medicine of ear disease, in all types of ear diseases, drinking ghee, taking chemical medicines, giving up exercises, bathing except the head, and not taking much. This is general medicine and diet. Dear all, with the contributions of acharyas who helped students to evolve by inculcating human values, knowledge, and skills, these studies were executed. The text mentions various illness, plants, preparations, and cures, along with complex techniques of plastic surgery. The Sushruta Sanghita's most well known contribution to plastic surgery
is the reconstruction of the nose, known also now as rhinoplasty. At that era, think about the first cataract surgery is said to have been performed by the ancient Indian physician Sushruta way back in the 6th century BCE. To remove the cataract from the eyes, he used a curved needle, Jabamukhi Shalaka, to loosen the lens and push the cataract out of the field of vision. The eye would then be bandaged for a few days till it healed completely. Sushruta's surgical works were later translated to Arabic languages, and through the Arabs, his works were introduced to the West. Examination of the pulse was also known to the Indian a few thousand years back, written in Nandi Purana in ancient times before the Western concept. There is a John Floyer from Britain in 1707, that is early 18th century. We got the concept of pulse. But in India, it was few thousand years back, it was known to us. During Ashoka's reign in ancient times, he established a series of public hospitals to provide food and medicine to travelers also. Skillful physicians and nurses were appointed at the expenses of the state to administer these hospitals and provide the required health care. If I talk about some other divisions of ancient medicines like yoga and naturopathy, Unani, Siddha, and homeopathy, which are some prominent Indian systems of medicine prevalent and practiced in India and some of the other regions as well. Friends, the Unani medicine system has been adopted and enriched by India. If I am not wrong, the maximum number of institutions offering education in the field of Unani medicine is in India, along with the maximum number of Unani medicine practitioners in the world. The Hakims of the Unani system and Vaidya of the Ayurveda system have provided affordable and effective treatments for a huge number of diseases, especially chronic diseases. Both systems of medicines are still attracting a large number of patients seeking therapeutic interventions. The government of India has strengthened this system under the Department of Ayush, providing resources and regulatory compliance support. Just now, it has been delivered by our Dr. Rahid. Is Dr. Rahid? Yes. Therefore, we have to understand the importance of the ancient knowledge tradition. Dear friends, special attention should be given to the Indian knowledge system, and this should be taught to our students. This is very important. I would like to mention that the National Education Policy 2020 facilitates the holistic development of students with a greater focus on experiential learning, thereby developing a holistic approach to the learning process. Moving forward, I would like to state that Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji once said, we have adopted
a holistic approach in our healthcare system. Today, our focus is not only in health but equally on wellness. This is also very important. I would like to mention that under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, a proactive approach has been adopted by the government and a paradigm shift took place in the healthcare sector in the past 9 years. A new approach to health and wellness became the core of health sector governance rather than just treating sick persons. The Ministry of Health and Family Welfare, through various centrally sponsored schemes and central sector schemes, supplements the effect of the states or UTs in the healthcare sector. The government, all these things you should know, even the charter accountant also. The government is ensuring holistic healthcare through some of the major schemes, such as National Health Mission, Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure. This is also very important. Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, establishment of new medical colleges, national program of prevention and control of cancer, diabetes, CVD, and strokes, national vector-borne disease control program, Pradhan Mantri Shastra Suraksha Yojana. In 2012-13, 6M started their academic session. But 2014 onwards, by following the vision of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, under PMSSY, 16 major projects for new aims in various states of the country. That is, Uttar Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, West Bengal, Punjab, Himachal Pradesh, Assam, Jharkhand, Gujarat, Telangana, Jammu and Kashmir, Bihar, Haryana, and Tamil Nadu are running. Our government has provided what? Vaccination to all. There is no other country, including under the Vaccine Maitri program also. India has supplied COVID 19 related medical and other assistance to over 150 countries since the beginning of the COVID 19 pandemic at a very affordable price. Dear all, Mission Indradhanush has immensely contributed to filling the gaps and making lasting gains toward universal immunization. When we were student or when we became just doctor, then thinking of encephalitis vaccination was also not a dream. It goes beyond dream. But now it has come in reality by the leadership of our visionary leader, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Dear all, Mission Indradhanush has immensely contributed, what I told just now, to filling the gaps and making lasting gains towards universal immunization. The Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana is the world's largest health assurance. Dear all, under the guidance of Honorable PM
Narendra Modi ji, the International Day of Yoga has been celebrated across the world annually on June 21 since 2015, following its inception in the United Nations General Assembly in 2014. The worldwide acceptance of yoga is a matter of pride. ताली तो बजना चाहिए ना। For our country, as yoga is an integral part of our nation's cultural and spiritual heritage. In this way, the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi led government has made Indian healthcare future ready. I should suggest to the organizer of this national summit, CA Dindayal Agarwal, Chairman CSR Research Foundation, to consider publishing a comprehensive book covering various aspects of healthcare system, modern medicines, Indian system of medicines, Ayush, etc., including preventive and promotive healthcare. This is a very important thing. I would like to, I thought to conclude immediately, but I have a desire to say something on Dr. B.C. Rai. That is on Shami Vivekananda. That is, whatever you believe, that will be. If you believe yourselves to be ages you will be tomorrow. There is nothing to obstruct you. Here, these doctors, can you raise your hands? 1, 2, 3, 4, 5. Either 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. I am asking that have you respect on others? Those who have respect on others means in other pathy. Other pathy or other branches. If you have, raise the hand. मन में है नहीं है तो भी हम उठा रहे। कभी कभी हम सोचते हैं हमारे पैथी भी बहुत अच्छा, but we have to know the science. If we know the science, just now Dr. Rohit told the pathology, there is the clinical examination and all these. Really, we can go at the peak of mountain. Just I'm telling few stories. Dr. B.C. Rai, after to get the degree of MRCP and FRCS, he applied 30 times. All the time it was rejected. And then he was roaming in a medical college campus. The tall on his sudden, and as because he is from Asia. The medical superintendent of that college, he asked him, examine this person and tell me your diagnosis. Dr. Bidhan Chandra Rai, he did not touch the patient. Did not touch the patient. And he told the patient is having chicken pox. Open the shirt and inner garments. There is no eruptions. And then he was asked, how can you come to know? He told, sir, I can smell. And on the next day, the eruptions was found. A lady came to his chamber. She was entering to the door.
before sitting in front of his chair, he asked, "Are you suffering from headache, severe headache?" And then the lady became pleased. How doctor can come to know that I am suffering from headache? And just before sitting on the chair in front of him, doctor, he told, "You change the brand of," जिसको हम बांग्ला में सिंदूर कहते हैं, आप यहाँ क्या बोलते हैं, सिंदूरी कहते हैं ना, "You brand the sindoor." And she changed and relieved. One day he was in his chief minister's room, and one IPS came, entered with a file, and he immediately told, "Get out, get out." He became, what happened? And he goes out. Immediately Dr. Rai asked his secretary and told him, "You admit him in the medical college. He is suffering from erysipelas, that is, sad knows better. That is the streptococcus infection on the face." If you see and type on the Google, you can see a red faces and the swelling of everywhere and the blips on the faces. It's a very serious. Nowadays, we do not get so much of patient because of invention of so many antibiotics. And the last one, it is to be a lesson for everyone, for the politician also. He went to America, and he was talking with President Kennedy, and he asked, "Have you any pain on the spine?" President Kennedy told, "Yes, yes, I have." Then he gave some advices and all this. And even after that, he told, this is a very important sentence, "By passion, I am a politician, but by profession, I am a doctor. Will you not give me fees, my fees?" Yes. Kennedy told, "Yes, yes, I'm ready to." And then he asked his secretary to find out the file of Calcutta Metropolitan Development Authority file, and that cost about 500 crores. And by Kennedy's endeavor from Rashtra Sangha, UNA, United Nations Assembly, West Bengal government received 300 crores. और ऐसा भी था, उनका जो पॉलिटिक्स में आने के बाद उनका घर बेचने पड़ा, ऐसे ऐसे सारे। ये आज के जमाना में सारे पॉलिटिशियन को एक एग्जाम्पल्स है, और बहुत सारे कहानीज है। एक तो था, ये मन में बहुत आ जाते हैं, सुनेंगे क्या? हाँ,
सबको निकाल देते हैं। जब ऑफिस 5 बजे के बाद राइटर्स बिल्डिंग में कोई नहीं रहते, उनका टीम ही केवल रहते हैं और सब फाइल चेक करते थे। उस समय क्या हुआ, एक सफाई वाला अंदर थे, उसका खांसी हो रहे थे, तुरंत वहां बैठ के, सिटिंग इन हिज ऑफिस, he ordered his secretary, ask him to come and you arrange tomorrow, or if possible today, to admit in the hospital. He is suffering from miliary tuberculosis. Just to think, specific, he is suffering from miliary tuberculosis. ये कोई ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्लिनिक्स में को क्या होता है ना, one of my teacher told that in India the patient enters into doctor's chamber with their diagnosis written over their forehead because they come late, and if you try to follow the different clinical attitudes, postures and everything, you can easily diagnose. That means he has noticed the different kinds of cough. This- Whether we are thinking of that, then today we should think there are super specialties, there are different domains. I am the expert of this domain. But my neighboring domain, should I forget? I should not forget. I have seen very good cardiologist, repeatedly, months together, years together, he is observing the patient. But I saw one patient. The patient, just 1 week back, he had the consultation with the cardiologist, but he has missed the massive pleural effusion. Pleural effusion means, for the chartered accountants, that is a water within the covering of the lungs, that is called pleura. Previously, it was a system by Parkinson. कोई टीन में कोई चावल भरा हुआ होता है, तब इसका क्या आवाज होता है? जब टीन खाली होता है, तब ठक ठक ठक, तो that method of examination. क्या डॉक्टर रहीत जी, ठीक है ना? तो क्लिनिक्स एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, दोनों को एक साथ लेकर चलना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, और एक चीज भी चाहिए। हम तो दिल्ली में बैठे हैं, यहां से 70 किलोमीटर दूर देहात है, हजारों किलोमीटर दूर कहाँ। जब थोड़ा हमको अच्छा कुछ हो जाते हैं, हम मेट्रो में एक शादी कर लेते हैं, वहां ससुराल होता है, हम नहीं करते तो हमारे बच्चे भी करते हैं। तो बच्चों को भी ये लेसन देना चाहिए। जब ये हम कर सकते हैं, तब इसको सारे फायदा होगा। We have to do for, we are for the people, we are for the society. We should connect each other. Thank you all. Bharat Mata. बस एक मिनट सर, आप 10 को सम्मान तो करो, डॉक्टर जी पर 10 लोगों को सम्मान करिए, इसके 10 पीपल्स, 5 मिनट, 2 मिनट्स। मे आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सुभाष सरकार, 2 मिनट सर। अच्छा डॉक्टर मंदा है मेरी, मंदा डॉक्टर मंदा, हाँ 2 मिनट डॉक्टर लो लाओ मुंट लो फटाफट। अरे कोई भी दे दे यार, अरे दे दे कोई भी। आइए जल्दी
सर एक लेडी डॉक्टर काव्य, डॉक्टर काव्य गोयल, काव्य गोयल देखो दे दे कॉपी दे दिया। अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर स्पेयरिंग फॉर योर टाइम। आज थैंक यू सर। ये डॉक्टर पैथोलॉजी से लास्ट लास्ट नोट देंगे सर। ये डॉक्टर आइए आइए थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब का हमेशा हमें आशीर्वाद मिलता है और मुझे आशा है कि भविष्य में भी ऐसा उनका आशीर्वाद मिलेगा। नाउ आई रिक्वेस्ट संतोष मंगल जी टू गिव ए मोमेंट टू डॉक्टर दलाल। लो बेटा दलाल जी का दो मोमेंट, एक इसमें आ गया देखिए ये तो आपको सब लगाओ बेटा, सब क्या है यार, जो दे मुझे दे दिया पकड़ा दे फर्स्ट के कौन से। डॉक्टर मयंक दलाल, मयंक जी आयो, स्वीकर से देते हैं बेटा, आइए हरिओम बंसल जी, जो भी देते हैं क्या नाम है फर्स्ट के दे देते हैं, दोनों बड़े दूसरा दे दिया। हाँ जी, हाँ कोई बात, एक डॉक्टर मैना जी एक बार आप चले आओ। फर्स्ट के कौन से हैं, फर्स्ट के थे हरिओम बंसल जी, चतुर्वेदी जी, सर हाँ चांदनी मेहरा जी के लिए मैं चाहूँगा कि जो हमारी एचपीसी से पार्टिसिपेंट है वो मंच पे आए पाटिल जी और उनका सम्मान करें। इसके बाद नेक्स्ट सेशन जो शुरू होगा और उसके लिए मैं चाहूँगा डॉक्टर लखेड़ा जी हैं एचओडी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, तो वो नेक्स्ट सेशन को शेयर करेंगे जी। Thank you all speaker of this session. May I request all the speaker to come on the dais, have a good photo. कभी राजनेताओं के लिए हमें प्रोग्राम को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है,
लेकिन मजबूरी ये भी है ऑर्गेनाइजर की कि उनका भी संबोधन चाहिए, क्योंकि हर प्रोग्राम में कोई ना कोई मिनिस्टर आता है तो उससे एक गिरीश बनता है और लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे प्रोग्राम को कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री से भी सबको भारत सरकार से सपोर्ट मिलता है। तो जो भी हमने इस सेशन को रखा था, फर्स्ट सेशन इज ओवर। थैंक यू ऑल दी स्पीकर और पर्टिकुलरली डॉक्टर मंदिरा मेहरा फॉर चेयरिंग द सेशन एंड काव्या, रोहित शर्मा जी, चतुर्वेदी साहब बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, और यंग चैप भी हमारे बीच में मिस्टर डॉक्टर दलाल और चांदनी जी, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो नेक्स्ट सेशन के लिए जो स्पीकर्स हैं, मैं चाहूँगा कि वो गजेंद्र सोलंकी जी हमारे बीच में है, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मंच में कोई बात नहीं, आप 2 मिनट का हमने ऐसे 2-3 मिनट का ये ब्रेक भी चल रहा है, तब तक मैं सबका नाम बोल देता हूँ। गजेंद्र सोलंकी जी हमारे बीच में है। आनंद जी आ गए क्या? गजेंद्र जी, गजेंद्र जी, आनंद जी आ गए क्या? ही नॉट कमिंग। अच्छा, चलिए डॉक्टर बी एस शर्मा जी, आशीष जी, डॉक्टर बी एस शर्मा जी देयर। चलिए वैद्य पूर्णिमा मिद्दा जी, यस, तो आप मंच में आइए। और मोहम्मद आरिफ जी, वेलकम, आपका भी स्वागत, आप मंच पे अभी। और हमारे बीच में डी कुमारम जी और बीसी लखेड़िया जी। लखेड़िया जी एक सेशन आप चेयर करेंगे। और हाँ जी, लगा दें, बीडी लगा दें, हाँ, बस मंद रहा था, बीपी माली करा था। लखेड़िया जी आप आइए मंच पे, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ इस चेयर सेशन करने के लिए। ये हमारे जो लखेड़िया जी, ये नहीं आए, बी एस शर्मा जी पता नहीं सोलंकी है इधर, मोहम्मद आरिफ जी है, और आगे चार गाँव बाकी देखो कौन कौन है। I request Vaid Purnima Midha, consultant Ayurveda. Please. I request Vaid Purnima Midha, please share the dice. Purnima Midha, Vaid Purnima Midha. Okay. I request Dr. B.S. Sharma, Professor and HOD, A&U, Tibia College. Please share the dice. I request Sri Gajendra Solanki ji. Please share the dice. I request Dr. Mohammad Arif, CMO, Unani Well Center. Please share the dice. I request Dr. Kumaran D. MO Siddha, CGHS. Please share the dice.
अच्छा अच्छा। माफी चाहूंगा कि आज दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रह गया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर मेहरा जी कहाँ हैं, अब आइए और दीप प्रज्वलन करके इसका विधिवत वो करें, शुभारंभ करें। ठीक है। और हरिओम बंसल जी, संतोष मंगल जी और ललित अरोड़ा जी, हेमंत वगैरह जी, सब आइए, एक बार दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर अरुण जाजी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो आए हैं और दीप प्रज्वलन करके इसको कार्यक्रम करें। श्री अरुण कुमार झा जी। या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविहारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। Thank you everyone for completing the lighting ceremony. Now I request all the dignitaries to please come on to the dais. Ved Purnima Mida, Dr. B.S. Sharma, Sri Gajinder Solanki, Dr. Muhammad Arif, Dr. Kumaran. Now I request Dr. Purnima Mida to deliver your lecture, please. आप सभी से अनुरोध है कि जो
व्यक्तिगत वार्ता में यहाँ पर बिजी हैं, उनसे अनुरोध है कि ये सत्र शुरू हो रहा है, तो आपसे भी आग्रह है कि इस सत्र में सम्मिलित हों और अपना स्थान ग्रहण कर लें। Wishing all of you present a very happy Doctors' Day. The integration of various pathies is probably the requirement of the day today. We have to have an interdisciplinary approach to fill in the gaps. As it is, the control of trying to control the non-communicable diseases, such as your cardiovascular or your lung disease or your diabetes or so many other, there are multifactorial diseases. The approach presently of treatment and rehab has not fulfilled it. So there is a gap. Okay, why is the number still increasing? Why in 2014 it was 50% deaths were because of these non-communicable diseases, and now before COVID they had forecasted a 70% rise. And COVID actually exposed everything that only treatment and rehab is, it's a lot of burden, economic burden, people burden, medicine burden. Everyone's trying everything. So that is what the integration requirement of not only Ayurveda, but other pathies also who are working with different communities. It's like you need a preventive platform, or a healthy environment. Healthy is not just like wishing everyone have a happy and a healthy lifestyle. Happy healthy is like you're physically, mentally, spiritually and socially. आप a patient comes to you, एक सिर्फ है problem क्या है, like we've just the sir was just telling the doctor, the patient just walked in and Dr. VC Rai was able to judge what was his issues. It was not rocket science. उन्होंने क्लिनिकल डायग्नोज बेसिकली वॉक जो बहुत पहले हम करते थे, probably only we have all these technologies coming, or we've lost on the clinical diagnose. The walk, the gait, the eyesight, the way the person, everything matters. And yes, you can write without even touching the patient what is the issue. Ayurveda has always been doing, promoting maintenance of health. So maintenance of health helps in prevention of a disease, and maintenance is through your lifestyles. We can go elaborately into the lifestyles, but we require the 4Ps for the healthy environment, which is globally happening, whether it is Europe 2020 or it is the they are promoting the 4Ps as in preventive medicine. Secondly is your predictive. Third is your participation. And fourth is your personalized. यहाँ पे आयुर्वेद का personalized, अगर you are, let's see, in the beginning of COVID or any problem, आपकी एक standard medication है any standard problem के लिए, you're tackling it. But why does that, or some part of the patients or percentage patients are not responding to the medicine? वहाँ पे वी आर एट अ लॉस कि हम यहाँ पे किसी भी यूनिक इंसान की प्रकृति नहीं देखते. प्रकृति इज योर इनबाउंड, और लेट्स से योर एटीट्यूड और योर लुकआउट टू लाइफ और वट एवर यू, आपकी वो कहते हैं ना इसका तो नेचर ऐसा है, तो दैट नेचर इज प्रकृति. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इसकी प्रकृति क्या है. आप उसके सिम्टम्स देख के जो चेंजेस आ रहे हैं, यू कैन डायग्नोज. यस, लाइक जैसे उन्होंने बोला कि स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, हेडेक है, माइग्रेन है, साइनोसाइटिस है, यू कम टू नो क्योंकि उसने डिविएट किया है अपने रूटीन से. एंड हर जगह पे वी डू नॉट रिक्वायर अ मेडिकल और मेडिसिन. बेसिकली अ स्मॉल डेविएशन मेक्स करेक्शंस. So here we are even saving on a lot of our economic, on your welfare. If you're investing in something which is regular happening, a lifestyle, आप हमारी I guess ना by now इतने सालों से अब यही है कि the top when it initiation होती है तभी सारा structure improve होता है.
Ayurveda has always been a living, uh, practicing medicine. It's ancient, but it is living and very much alive and curing people, reaching out to people. But now, because the head of our state, the Prime Minister, has promoted to different forms yoga. योगा से कितने लोगों की चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो गए बिना मेडिकेशन के, और प्रॉब्लम मेडिसिन लेने के बाद भी सेटल नहीं हुई, बट योग क्रिया करने से, अलग अलग चीजों करने से, अंडर गाइडेंस डेफिनेटली इंप्रूव हुई है. तो वहां पे जो फेल हुआ, यहाँ पे इसने हेल्प कर दिया. सो दैट इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड. आई एम नॉट सेइंग ट्रीटमेंट और एनी पैथी इज रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं सब में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जहाँ पे बहुत चीज़ें हम भर लेते हैं. आप किसी का नेचर जान लेते हैं तो आप उसको ट्रीट करने में आपकी मदद हो जाती है. सो देयर वर ऑलवेज दीज rules or things, how things should be done. It's like आपने बचपन में पेरेंट्स ने बोला है, या पेरेंट्स तो अब नहीं बोलते हैं बिकॉज नाउ वी आर पार्ट ऑफ द पेरेंट्स, बट आवर पेरेंट्स, गरम सर्द मत करो, एकदम हवा से आए हो, गरम ठंडा पानी मत पियो. अब क्या है ना, कुछ नहीं होता. खांसी, डॉक्टर को खांसी हो रही है, जुकाम ठीक नहीं हो रहा. He is not going to ask you कि तुमने गरम सर्द किया है नहीं किया, but that was a cause of it. So it helps. These very small things, we prevent so many sinusitis का एक issue बन गया, एक surgery हो रही है, ये हो रहा है. Which surgery has promised that things will not reoccur? Because these are part of processes. This is not something you've scooped it and it's out. It will grow again. So please, we just need to implement whatever things have been told, our lifestyles, we know what is right and which is wrong, and wishing you all a very healthy and a happy life. Thank you. Thank you, Dr. Purnima Midha, for such a enlightening lecture. We have learned a lot about Ayurveda. Now I request Dr. B.S. Sharma to please deliver your lecture. Acha, Girinder. Now I request Sri Girinder Solanki ji. धन्यवाद डॉक्टर बीसी लखेरा जी. भाई हमारे मित्र दीनदयाल अग्रवाल जी, सीएसआर फाउंडेशन के चेयरमैन, और डायस पर उपस्थित सभी महानुभाव, और यहाँ सभागार में जो भी महानुभाव हैं सभी का अभिनंदन करता हूँ. डॉक्टर्स डे की बधाई, सीए दिवस की भी बधाई. और आज एक और अभी मुझे पता चला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी स्थापना दिवस है आज. और भी बहुत सारे ऐसे विषय हो सकते हैं एक दिन के साथ में जुड़े. आज यहाँ पर ये जो हेल्थ से रिलेटेड होलिस्टिक और भी जो बातें हैं, मुझे कुछ देर योगा के विषय में बोलने के लिए कहा गया है. योग जो है अपने आप में महाविज्ञान है, हम सभी जानते हैं, और थोड़ी बहुत नॉलेज में अभ्यास करता रहा हूँ. 20-25 वर्ष मैंने भी योग किया और उसके लाभ मुझे मिले. किस रूप में मिले? अलग अलग तरीके से हम आदिकाल से देखते हैं. भगवान शंकर बताते हैं आदि गुरु माने जाते हैं योग के. उसके बाद वो परंपराएं आगे बढ़ती रही निरंतर, और बहुत सारे योगियों ने इसको नए नए आयाम दिए, और उसको महर्षि पतंजलि योग दर्शन के माध्यम से उसको संकलित संग्रहित करके एक जगह इकट्ठा करके मतलब मानवता को समर्पित किया गया. उसके बाद में भी निरंतर गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ और घेरंड संहिता और अनेक अनेक माध्यमों से योग को हम पढ़ते रहे, और वर्तमान तक चलते चलते जब आया तो योग जो है विश्व का एक दर्शन बन के आज कॉमन यूएन के माध्यम से पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है. अभी हमने मनाया. तो योगः कर्मसु कौशलम कहा जाता है. कर्म करने की जो योग्यता प्रदान करने वाली जो विधा है, एक विज्ञान है, उसको लोग साधु सन्यासियों तक सीमित समझ के रखा हुआ था, लेकिन आज घर घर तक पहुंचा है योग. चाहे भले ही स्वामी रामदेव जी के माध्यम से स्वामी राम,
महेश योगी और अनेक ऐसे वर्तमान में योगी रहे हैं जिन्होंने उसको यहाँ पर आपने याद होगा गोल डाक खाने के पास में विश्वायतन योग केंद्र हुआ करता था, जिसको धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने बहुत पॉपुलरिटी दी, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे विषय आते हैं। तो मुझे जो लगता है वर्तमान में जो समस्याएं चली आ रही हैं और निरंतर मानव प्रगति कर रहा है, उड़ा गगन में धरा छोड़कर क्षुद्र स्वार्थ को छोड़ ना पाया, अपने ही शस्त्रों के कारण यह मानव तड़पा अकुलाया, जो निरंतर प्रगति कर रहे हैं हम, उस प्रगति में कहीं हम अपने शरीर के साथ में जो अन्याय कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं। योग हमको नेचुरल लाइफ जीने की प्रेरणा देता है और मार्गदर्शन भी करता है। और योग के बारे में बहुत सारे विषय हो सकते हैं। अष्टांग योग को हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के रूप में जानते हैं, उसकी अलग अलग व्याख्या की जा सकती है। ये समग्र रूप से अगर देखा जाए तो हमारा ये पंच तत्व से बना, जो पंच महाभूतों से बना जो शरीर है, उसको किस तरीके से हम स्वस्थ रख सकते हैं, एक विज्ञान है। अगर आप मेडिकल साइंस के माध्यम से भी आप देखेंगे तो ये बताया जाता है कि एक सेल जो होती है वो अपने लाइफ में, मतलब पूरा मनुष्य के जीवन में 80 से 90 बार डिवाइड होती है, और अगर उस सेल को स्वस्थ रखा जा सकता है तो ऐसे ही उसकी आयु एक 5 वर्ष के आसपास होती है। एक सेल की आयु अगर उसको स्वस्थ तरीके से साफ सुथरा रखा जाए, टॉक्सिन्स ज्यादा नहीं हो, इम्प्योरिटीज ज्यादा नहीं हो, क्योंकि इम्प्योरिटीज ही सबसे बड़ी समस्या है। मतलब हमको रोगग्रस्त करने के लिए या हमको किसी तरीके बुढ़ापे की तरफ ले जाने के लिए जितने टॉक्सिन्स, जितनी इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज डिपॉजिट होती हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो स्लो होने लगता है। इम्प्योरिटीज होने से हमारे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो स्लो होने लगते हैं। रिफ्लेक्सेस स्लो होने से क्या होता है कि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो हमारे जो नेचुरल मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक फंक्शंस हैं, वो स्लो होने लगते हैं। उससे इम्प्योरिटीज ज्यादा होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। ये जितनी हमारी इम्प्योरिटीज ज्यादा होती चली जाएंगी उतनी ही हमको कहीं ना कहीं रोग हमारे शरीर में बढ़ते चले जाएंगे, चाहे थायराइड हो या घुटनों में दर्द हो या बहुत सारी समस्याएं। अब डॉक्टर्स ज्यादा जानते हैं उस विषय के बारे में। डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है। वही वैसे जोक भी आता है एक कि जब भगवान नाराज होते हैं तो हमको डॉक्टर साहब के पास भेज देते हैं, और डॉक्टर साहब जब नाराज होते हैं तो ये भी कहा जाता है। लेकिन अभी पिछले दिनों जब कोरोना का महासंकट आया पूरे देश और पूरी दुनिया में, तो उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं था इलाज का। अपने अपने तरीके से सबने इलाज किए। अब वैक्सीनेशन की बात हमारे अभी मंत्री जी कह के गए। वैक्सीनेशन के बारे में मैं ज्यादा नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, वो आज हमको पता चल रहे हैं। कितने ही हार्ट अटैक से, कितनी ही बीमारियां आ गई हैं, क्योंकि जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी थी उस पे कब्जा करके, जैसे कोई डाकू घर में घुसाता है ना, ऐसे ही हमारे शरीर में इंजेक्ट करके वो चीज आ गई, और उसके बाद में जो कुछ भी हुआ हमें कहने की जरूरत नहीं है। आज उसके कॉम्प्लिकेशंस हमको सबको समझ में आ रहे हैं। पूरी दुनिया इस बात को देख रही है। बहुत से हमारे दोस्त राजू श्रीवास्तव हैं, ऐसे वैसे बहुत सारे हमारे मित्र जो हैं वो चले गए। उसका कारण यही था कि हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी थी, हार्ट के कार्डियक मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स की आयु बताते हैं 400 वर्ष तक होती है। अगर उसको सही ढंग से मेंटेन करके रखा जाए, हमको बीमारियां कम हो, जैसे कि अपना बहुत सारे डायबिटीज वगैरह, इस तरह की जो बीमारियों से हमारी मसल्स कमजोर होती चली जाती हैं। तो योग जो है वो हमको सही जीवन जीने का रास्ता दिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने 20-22 वर्ष योग किया है, और योगा फॉर स्पोर्ट्स मैंने एक टाइप ऑफ रिसर्च वर्क किया। अब उसमें क्या रिसर्च वर्क में क्या था कि मैं जब स्पोर्ट्स कर रहा था, कॉलेज में पढ़ रहा था, स्पोर्ट्स कर रहा था, तो उस समय साथ साथ में योग भी कर रहा था। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जब मैं जितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक स्पोर्ट्समैन को करनी चाहिए, उससे आधी भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। पढ़ाई वगैरह का भी लोड था, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने इंटर कॉलेज की चैंपियनशिप जीती, इंटर कॉलेज खेला, कॉलेज खेला, अपना यूनिवर्सिटी खेला। तो उसके कारण मुझे केवल यही नजर आया, उस समय मैं सोच नहीं रहा था, केवल योग के कारण मुझे वो कहीं ना कहीं इंटरनल स्ट्रेंथ जो थी, मस्कुलर स्ट्रेंथ जो थी, वो प्राप्त हुई। और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में हमें कहने की जरूरत नहीं है। जो शरीर या जो जैसे कोई पेड़ लचीला होता है तो आंधी तूफान में भी वो सहन कर जाता है, ऐसे ही अगर हमारा शरीर जो है लचीला होगा तो उसमें बहुत सारे सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, हमारी मसल्स में लचीलापन आता है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है,
ऐसा बताते हैं, डॉक्टर्स ज्यादा जानते होंगे कि 1/5 ऑफ द टोटल ब्लड सप्लाई इज रिक्वायर्ड बाय आवर ब्रेन फॉर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो वॉलंटरी फंक्शन, इनवॉलंटरी फंक्शंस के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, हमारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो 1/5 हमारी ब्रेन को चाहिए। और योग करने से क्या है, हमारे ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई भी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, उसके कारण हमारी एफिशिएंसी जो होती है वो खूब बढ़ जाती है और व्यक्ति जो है कर्म योग करने में ज्यादा सफल हो पाता है। वैसे ये बताते हैं कि 5 चेतना के स्तर होते हैं। एक स्तर होता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश जो ये शरीर दिखाई देता है, ये हमारे फूड और हमारे वाटर कंटेंट्स वगैरह से पोषित हो रहा है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सभी कुछ इसको बॉडी को मिल रहे हैं, जिससे कि हमको शरीर जो दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश उसको आधार दे रहा है, सारा रेस्पिरेशन उपापचय की जो क्रियाएं हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शंस जो हैं, वो उसको आधार दे रही हैं, प्राणमय कोश। उसके बाद में मनोमय कोश आ जाता है। मनोमय कोश बताते हैं कि 90% बीमारियां मन के द्वारा होती है। मन अगर स्वस्थ है तो हमारा शरीर बीमारियों से दूर रहता है। मनोमय कोश की बात जो होती है, तो उसके बाद में मनोमय कोश की 10 इंद्रियां बताते हैं, वो संचालित होती हैं मन के द्वारा। उसके बाद में विज्ञानमय कोश आ जाता है। विज्ञानमय कोश जो है बुद्धि, चित्त, अहंकार को मैं समझ गया सर, टाइम की लिमिटेशन से, कोई बात नहीं है। कवि को रोकना नहीं चाहिए, थोड़ी देर 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ, विज्ञान में कोश बुद्धि, चित्त, अहंकार की बात की जाती है, उसके बाद आनंद में कोश होता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि वर्तमान में जो आर्टिफिशियल लाइफ हम जी रहे हैं, प्रकृति से दूर हो गए हैं। प्रकृति से दूर होने का मतलब हम सभी जानते हैं कि ये शहरों की जो जिंदगी है, इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज वैसे ही कम होती है, क्योंकि वाहन भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और मनुष्य तो और जीव जंतु तो करते ही हैं। इसलिए ऑक्सीजन के द्वारा जो हमारा प्राण में कोश सशक्त होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। 10 वायु जो हैं शरीर के, जो नाक, कूर्म, उदान, व्यान, समान वगैरह, ये सारे जो वायु हैं, उसका राजा प्राण होता है। अगर प्राण को सशक्त रखा जाता है तो योग हमारे प्राण को सशक्त करता है, तो बीमारियों से व्यक्ति बचा रहता है। और हमारे ऋषि मुनियों का बहुत इतिहास है पूरा का पूरा, कि जो महापुरुष हमारे हुए हैं, उन्होंने योग के द्वारा ही अपने आप को समर्थ बनाया, और योग के माध्यम से जो हमारी अंतर चेतना है, हमारी शारीरिक मानसिक जो क्षमताएं हैं, उनको बढ़ा के योग के माध्यम से महापुरुष कहलाए, या जो भी जिनके बारे में योगेश्वर भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं, उन्होंने 16 वर्ष के अभिमन्यु को योग के माध्यम से महायोद्धा बना दिया था। ऐसे ही हम चाहते हैं कि योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाया जाए। और मुझे लगता है कि आज का ये डॉक्टर्स डे पर, डॉक्टर्स भी अब तो सब कहते हैं कि भाई योग जरूर कीजिए, प्राणायाम कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, जिससे कि हम जो है स्वस्थ रह सकते हैं। तो मुझे लगता है डॉक्टर्स डे पर मैं कवि हूं, हालांकि योग के बारे में मैंने थोड़ा अध्ययन कर लिया है, अभ्यास भी किया है, इसलिए कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज, जैसे कहते हैं ना कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जहते हैं करत करत प्रकाश। तो थोड़ा सा नॉलेज जो मुझे योग के बारे में है, समय कम है, नहीं तो घंटों बोला जा सकता है इस विषय के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। आपसे कविता की उम्मीद थी। कभी सागर, मैं एक कविता पर्यावरण से संबंधित सुनाई देता हूं। कर ध्यान सृष्टि का जीव श्रेष्ठ, अपने कर से ना कर विनाश, अब भी ना संभले हे मानव, हो जाएगा अस्तित्व नाश। जिससे है यह अस्तित्व तेरा पद दलित, उसे ना कर प्राणी, तपती उस ऊसर वसुधा पर फिर गूंजेगी किसकी वाणी। जो जीवन हमें मिला उसके ये वृक्ष ही जीवन दाता है, जो जीवन हमें मिला उसके ये वृक्ष ही जीवन दाता है। सच पूछो तो हर प्राणी के ये वृक्ष पिता और माता है, सच पूछो प्राणी के ये वृक्ष पिता और माता है। कर रहे जिसे हम नष्ट भ्रष्ट, उसका प्रतिशोध भयानक है। ना बनाए रेगिस्तान ये से यह अपना ही घर आंगन है, और अपनों के सुख के लिए आज जो महल बनाता है मानव, ना भूलें उसका मूल्य वही खा जाएगा बनकर दानव, खा जाएगा अब रोक बाढ़ जनसंख्या की, वरदान को ना अभिशाप बना। अब रोक बाढ़
जनसंख्या की वरदान को ना अभिशाप बना, बढ़ते इस घोर प्रदूषण से होगा अपना दूभर जीना, होगा अपना दूभर जीना। कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है, अभी हम सीख ना पाए जमीन पे चैन से रहना, सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है, सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। Thank you, sir. Now I request to Dr. B.S. Sharma to please conclude within 5 to 7 minutes. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्प्रभापटलोद्भासि भासतेऽद्यापि भारतम्, आयुर्वेदात्मकं ज्योति शाश्वतं नः प्रकाशताम्। सबसे पहले मैं उस दिव्य ऋषि परंपरा और गुरु परंपरा का नमन करना चाहता हूँ, जिनके अथक प्रयास, अथक साधना, अथक तप के माध्यम से आज आयुर्वेद रूपी जो दिव्य ज्ञान है, जो निर्दुष्ट ज्ञान, किसी दोष रहित ज्ञान है, वो आज हमें उपलब्ध हुआ है। तो उस ऋषि परंपरा, शिष्य परंपरा और गुरु परंपरा को मैं नमन करता हूँ। परम श्रद्धेय on the dais and of the dais. आपको करना है? अच्छा, कंट्रोल आपके हाथ में। यस प्लीज। आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट थोड़ा सा अलग हटके हो सकती है, आपको लगे कुछ चीज़ें, लेकिन निश्चित रूप से बहुत लाभदायक रहेगा और आपके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग भी रहेगा और आप निश्चित रूप से उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट न्यूट्रिशन को लेके काफ़ी गंभीर और बहुत प्रैक्टिकल है। आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट अगर डाइट का हम देखें और न्यूट्रिशन का देखें तो सप्लीमेंट से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म पे डिपेंडेंट है। प्लीज़, अरे मेरा टाइम जा रहा है अभी। तो आयुर्वेद जहाँ न्यूट्रिशन की बात करता है, सबसे पहले अग्नि की बात करता है, मेटाबॉलिज्म। आयुर्वेदिक डाइट एंड न्यूट्रिशन इज डिपेंड ऑन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग डाइट का मैनेजमेंट होता है। भाई साहब, इससे पहले वाली, इसलिए स्ट्रेंथ, हेल्थ, लॉन्जेविटी एंड प्राण आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अग्नि दैट बर्न्स व्हेन फेड बाय फ्यूल ऑफ फूड एंड ड्रिंक। नेक्स्ट प्लीज। इसीलिए फूड एंड बेवरेजेस टेकन इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम with the seasonal consideration are a source of life and vitality. Wholesome food is the fuel that maintains Agni. हमारा जो पर्पज होता है आहार से, विहार से या मेडिसिन से, हमारे जो अंदर अग्नि है, अग्नि जो निरंतर जल रही है एज ए मेटाबॉलिज्म, उसको मेंटेन रखने का हमारा पर्पज होता है। क्योंकि शांतिक नो मृते युक्त, आयुर्वेद में कहा कि जब तक अग्नि प्रज्वलित है हमारी इम्यूनिटी इंटैक्ट है और हम स्वस्थ हैं। जैसे ही अग्नि हमारी डिमिनिश होती है, हम वायरस, बैक्टीरिया और बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाते हैं। नेक्स्ट। इसीलिए डाइट के, और अग्नि डिपेंडेंट है डाइट पे, तो डाइट को की इंपॉर्टेंस को देखते हुए आचार्य काश्यप ने आहारम महाभेषज्यम कहा है कि डाइट इज द ग्रेट मेडिसिन। नेक्स्ट प्लीज। आयुर्वेद में अग्नि डिपेंडेंट हो गया। सेकंड, आयुर्वेद की जो न्यूट्रिशन के जो फैक्टर्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, इस तरह से मॉडर्न मेडिसिन मानता है। इस तरह से आयुर्वेद जो न्यूट्रिशन के जो फैक्टर्स है वो 6 टेस्ट को मानता है। 6 रस जो हमारे होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये जो 6 रस हैं वो हमारे डाइट और न्यूट्रिशन को
मैनेज करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं या उस पर डिपेंडेंट है। जैसे जो फर्स्ट तीन जो रस हैं, मधुर, अम्ल और लवण, ये हमें न्यूट्रिशन, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जबकि लास्ट के जो थ्री टेस्ट हैं, कटु, तिक्त और कषाय, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। मींस मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना और एनर्जी प्रोवाइड कराना दोनों छह रसों पे डिपेंडेंट है। इसलिए कहा गया है कि नित्यम सर्वरसाभ्यास है, कि नियमित रूप से छह रस जो हमारे हैं उनका अभ्यास हमें करना चाहिए। एक रसाणाम दौर्बल्य कराणाम, ये कहा है। अगर किसी एक रस का या दो रस का टेस्ट का हम नियमित रूप से ज्यादा इनटेक करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस है। नेक्स्ट प्लीज। सिलेक्शन ऑफ डाइट। आयुर्वेदिक जो डाइट है वो उसके सिलेक्शन के जो कुछ क्राइटेरिया है, एज पर सीजनल वेरिएशन होता है। ऐसा नहीं कि एक डाइट प्रिस्क्राइब कर दी वो 12 महीने चलेगी। सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे ज्वार है, मिलेट्स का चल रहा है, लेकिन मिलेट्स में जो ज्वार है वो जो ज्वार जो है समर में बेनिफिशियल है, बाजरा है वो विंटर में बेनिफिशियल है, क्योंकि इनकी जो तासीर है, हर अन्न है वो पांच भौतिक संगठन से बना हुआ होता है। किसी अन्न में फायर कंटेंट ज़्यादा है, किसी में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, किसी में एयर कंटेंट ज़्यादा है। तो उस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो तासीर बनती है आहार की, और उसी को फिर हमारे सीजन के अकॉर्डिंग हम लोग निर्धारण करते हैं। तो इसी तरह से जो मक्का है वो गर्मियों में ले सकते हैं, बाजरा है सर्दियों में लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो मल्टीग्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो आयुर्वेद निष्ठ नहीं है, इसमें हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। नंबर 2, सूप और जूस। सूप में भी मोर बेनिफिशियल इन विंटर सीजन एंड जूस आर मोर बेनिफिशियल इन समर सीजन, क्यों बॉडी को रिहाइड्रेट करते हैं। गर्मियों में हमारी रिक्वायरमेंट होती है रिहाइड्रेशन की, तो जूस रिहाइड्रेट करते हैं। एंड सूप में हमारे जो है हमें हीट प्रोड्यूस करते हैं हमारे शरीर में, हमारे तापक क्रम को, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन हमारा एक उद्देश्य होता है। इसी तरह फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स में भी मोर बेनिफिशियल इन समर विंटर सीजन, जब मेटाबॉलिज्म हमारा हाई होता है। लेकिन जो फ्रूट्स हैं वो समर वेकेशन, समर में ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे को रिहाइड्रेट करते हैं, जो बॉडी को हमें शीतलता देते हैं, ठंडक देते हैं। तो ये सर्दियों में इनका उपयोग कम करके ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा यूज करना चाहिए। इसी तरह से एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी, जैसा मैडम ने कहा कि हमारी बॉडी की जो तासीर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग डाइट का निर्धारण होना चाहिए। लाइक मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर मच यूजफुल फॉर ए पर्सन हैविंग एयर कंटेंट। जिनकी बॉडी में एयर कंटेंट ज़्यादा है वो डेयरी प्रोडक्ट ले सकता है। जिसकी बॉडी में फायर कंटेंट ज़्यादा है उसको घी लेना चाहिए। जिसकी बॉडी में वाटर कंटेंट ज़्यादा है उसके लिए डेयरी प्रोडक्ट इंजूरियस हो सकते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकते। तो डेयरी प्रोडक्ट को हम हर जगह डिस्कार्ड करने लग गए, लेकिन हर जगह डिस्कार्ड करने का नहीं है। जिनका वाटर कंटेंट जिनकी बॉडी में ज़्यादा है उनको डेयरी प्रोडक्ट है उनको मिनिमाइज कर देने चाहिए। इसी तरह से एज पर स्टेटस ऑफ हेल्थ स्टेटस क्या है, वेदर द इंडिविजुअल इज पेशेंट, सिक और हेल्दी पर्सन के लिए अलग डाइट रिकमेंडेड है और सिक पर्सन के लिए अलग डाइट। आयुर्वेद में सामान्य रूप में देखा जाए तो आहार डाइट जो है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी, कि वो उसमें उसको डाइजेस्ट करने में कितना हमें पावर लगता है, कितनी अग्नि की आवश्यकता है, मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी के आधार पर आहार को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक गुरु आहार हेवी टू डाइजेस्ट, एक लघु आहार लाइट टू डाइजेस्ट। तो इसके आधार पे उसकी जो क्वांटिटी को हम कंज्यूम करने का है कि अर्धसोहित्यम, कि जितने भी जो हेवी टू डाइजेस्ट हैं गुरु आहार हैं उनको हमारी भूख से आधा हमें ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह से लघु आहार है, लघु को जो है भी भूख से ज़्यादा उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो जैसे मूंग की दाल पल्सेज है, प्रोटीन का जहाँ सोर्स आ जाता है, तो पल्सेज में मूंग की दाल लघु आहार में मानी जाती है, उड़द की दाल जो है गुरु आहार में मानी जाती है। नेक्स्ट कंप्लीट पैकेज ऑफ न्यूट्रिशन। आयुर्वेद में डाइट को दो तरह से डिवाइड किया है, एक हितकर डाइट, एक अहितकर डाइट। जो भी खा रहे हैं वो सब डाइट है, लेकिन जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है दैट इज हितकर डाइट।
वो हितकर डाइट हमारे फिजिकल लेवल पे नरिशमेंट देने के साथ साथ हमारे मन जो है, हमारा सत्व है, उसको भी एनर्जाइज करता है। तो ये जो डाइट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज ए कंप्लीट पैकेज ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें से 80% 90% को अगर हम फॉलो करते हैं तो विटामिन की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी एंड कार्ब्स एंड प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने के कोई चांस नहीं होते हैं। लेकिन अब विचार करना चाहिए कि इनमें से हम कितना रोज कंज्यूम कर रहे हैं। सीरियल्स में बार्ली, राइस एंड व्हीट, ये बेस्ट हितकर आहार हमारे हैं। पल्सेज में मूंग की दाल, ग्रीन वेजिटेबल्स घिया, तोरई, परवल, लीफी वेजिटेबल्स तोरई, चौलाई एंड बथुआ, सॉल्ट्स में सेंधा नमक, रॉक साल्ट, एंड लिक्विड्स में काऊ मिल्क एंड काऊ घी एंड हनी, फ्रूट्स में अनार, आंवला, हरड़, ड्राई फ्रूट्स में मुनक्का और डेट्स। ये कंप्लीट हमारा जो एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसका एक पैकेज हो जाता है, जो आचार्य चरक ने रिकमेंड किया है कि ये नियमित रूप से हमें लेना चाहिए। हरड़े को उन्होंने विशेषकर इंडिकेट किया है कि हरड़े प्यूरिफाई करता है हमारी बॉडी को। प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यूस हमारे पर डे होते रहना चाहिए। इस पर्पज से इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है। नेक्स्ट प्लीज। फूड आइटम टू बी कंज्यूम्ड रेगुलरली मीन्स ऑयल, घृत और हनी, तीनों वात पित्त कफ का बैलेंस बनाने के लिए जो वात प्रकृति के जो लोग हैं, जिनको वातिक डिजीजेज हैं, उनको ऑयल का कंजप्शन ज़्यादा करना चाहिए। जो पित्त प्रकृति के हैं या जिनमें फायर कंटेंट ज़्यादा है, उनको घृत का, घी का सेवन ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। और हनी, जो लोग वाटर कंटेंट जिनमें ज़्यादा है, कफज प्रकृति के जो लोग हैं या कफज संबंधी व्याधियाँ, डायबिटिक है, ओबेसिटी है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, उनको हनी का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। डोंट कंज्यूम रेगुलरली, ये कुछ आहार द्रव्य ऐसे बताएं जिनको रेगुलर कंज्यूम नहीं करना चाहिए। जैसे अब यहाँ थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, पनीर, चीज, पोर्क, मीट ऑफ काउ, बफेलो एंड काउ मीट, फिश, कर्ड, ब्लैक ग्राम एंड ओट्स, ये डेली रिकमेंडेड नहीं है। इनका डेली लंबे समय तक यूज नहीं करना चाहिए, बीच बीच में कभी कभार कर सकते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। रेस्ट्रिक्टेड फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम्स ये एब्सोल्युटली रेस्ट्रिक्टेड है, लाइक ड्राइड मीट, ड्राइड वेजिटेबल्स, कमल नाल, क्यों? बिकॉज दे आर हेवी टू डाइजेस्ट एंड वन शुड नेवर ईट मीट ऑफ इमेसिएटेड एनिमल। जो एनिमल ऑलरेडी इमेसिएटेड है उसका मीट भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, जंक फूड, मैदा के प्रिपरेशन सब अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। फूड आइटम्स नॉट टू बी कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, अल्कलाइन क्षार और पिपली एंड लवण, नमक ज्यादा मात्रा में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। की फैक्टर्स टू एंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन, आयुर्वेद में इतना होने के बाद में ये बताया कि 8 उन्होंने विधियां बताई है कि किस तरह से आहार को मोर बेनिफिशियल बनाया जा सकता है इंडिविजुअल के लिए, हर व्यक्ति के लिए कैसे उसको इंडिविजुअलाइज हम उसको बेनिफिशियल बना सकते हैं। उसके लिए उन्होंने अष्ट आहार विधि विशेषायतन कहे हैं कि 8 प्रकार से हम किसी भी आहार को किसी पर्सन विशेष के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लाइक प्रकृति के आधार पर आहार की प्रकृति क्या है, लघु है, इजी टू डाइजेस्ट है, या हेवी टू डाइजेस्ट है। उसके आधार पर मूंग की दाल कितनी मात्रा में, मूंग की दाल लघु है तो उसको ज़्यादा मात्रा में ली जा सकती है, उड़द की दाल लेनी है तो उसको कम मात्रा में लें। इसी तरह से प्रकृति करण, करण मीन्स प्रोसेसिंग, किसी भी चीज़ की प्रोसेसिंग को डिफरेंट करके हम उसको हम उसके लिए बेनिफिशियल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोगों को आंवले का जूस आंवले का जूस तो हर तरह से बेनिफिशियल है, लेकिन कईयों को सूट नहीं करता। आंवले का जूस लेते ही उनको गले में खराश होने लग जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरह के लोगों को आंवले का जूस गर्म पानी के साथ उसको आप प्रोसेस कर सकते हैं। या जैसे लेमन जूस है, लेमन जूस को गर्म पानी के साथ लेमन टी के रूप में ले सकते हैं। इसी तरह से सलाद, जैसे पेशेंट है, पेशेंट को हम सलाद देते हैं तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होती है,
पेशेंट के लिए स्टिम्ड सलाद दे सकते हैं, और नॉर्मल जो पेशेंट इंडिविजुअल है उसके लिए हम नॉर्मल सलाद दे सकते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल और देता हूँ कि जैसे चना है, चने को कंजप्शन के लिए कोई किसी को एडवाइस देता है, तो किसी व्यक्ति को किस रूप में चने का कंज्यूम करना चाहिए, इसका बहुत इसमें अष्ट आहार विधि विशेषायतन के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कोई एक रेसलर है, उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो चने को रात को भिगोए, सुबह भीगे हुए चने को वो खा सकता है। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है, जो एक्सरसाइज नहीं करता, जिसका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है, उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा और फिर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स उसको होनी है। तो इस तरह के व्यक्ति को कहा कि भाई उसको आप बॉईल करके यूज कर सकते हैं। कुछ जिनकी और भी एपेटाइट डिक्रीज होती है, उनको कहते हैं कि बॉईल करके और आप उसमें अदरक वगैरह जितने भी पल्से हमारी जो मसाले हैं वो मिला के उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से कईयों को जैसे नॉर्मल हम कहते हैं कि भाई चावल राइस बेस्ट न्यूट्रिशन का सोर्स, कार्ब्स का सोर्स हो सकता है, लेकिन कई बार पेशेंट को चावल डाइजेस्ट नहीं होते, या जो ओबेज पर्सन है वो उसके लिए चावल हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको हम चावल से बनी हुई खील दे सकते हैं। तो ये अष्ट आहार विधि विशेषायतन के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट प्लीज। कुछ रॉन्ग कॉम्बिनेशंस भी हमारे डे टू डे लाइफ में प्रेवलेंट हो गए हैं, जो कि हमारी मेटाबॉलिज्म को वीक करते हैं और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पैदा कर रहे हैं। क्योंकि आज की एरा में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म, ओबेसिटी, डायबिटीज, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन और ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही। उसका वजह है, सबसे बड़ा वजह है रॉन्ग कॉम्बिनेशंस। क्यों, किस तरह के जो अब रेसिपी तैयार की जाती है उनमें कॉम्बिनेशंस रॉन्ग बन रहे हैं। जैसे लाइक एक ये है, शेक जितने भी है फ्रूट्स के साथ मिल्क, इनके कॉम्बिनेशन रॉन्ग होते हैं। किसी भी फ्रूट के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ मिल्क चल सकता है, लेकिन किसी भी और फ्रूट के साथ अगर हम मिल्क लेते हैं तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज ए रॉन्ग कॉम्बिनेशन। इसी तरह से किसी भी वेजिटेबल्स के साथ में या नमक का जो प्रिपरेशन है उसके साथ में अगर मिल्क लेते हैं तो वो भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन में आता है। नेक्स्ट। तो मैंने मेरा प्रयास किया है कि समय टॉपिक वास्ट था और कुछ आप लोगों में इस चीज़ को एक संस्कार डाल सकेंगे, कुछ थोड़ा बहुत आप विचार करें कि निश्चित रूप से आयुर्वेद का जो डाइट को लेके जितना विचार है, जो उसको आगे आप उस पर विचार करें और निश्चित रूप से एक पॉजिटिव चीज़ लेके जाएं। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Sir. Very nice lecture given by you. Now I request Dr. Muhammad Arif to please deliver your lecture. Good afternoon, dignitaries sitting on the dais, respected personalities present over here. मैं चूँकि यूनानी से हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले यूनानी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूँ और उसके बाद में उसके जो चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैं मुख्तसर सा बताऊँगा। सबसे पहले मैं बताऊँ कि एजुकेशन के यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो कॉलेजेस हैं एजुकेशन के सिलसिले में 55 टीचिंग कॉलेजेस हैं यूनानी में ऑल ओवर द इंडिया, जिसमें इनटेक कैपेसिटी है 3000 पर ईयर। आउट ऑफ 55 colleges, 14 colleges are imparting the postgraduate education. The intake capacity of the postgraduate students are 200 students per year. There are only 3 institutions who are giving the doctoral education, PhD education. They are Jamia Millia Islamia at Delhi, National Institute of Unani Medicine, Bangalore, and third one is at Hyderabad. Now we come to the next point, the practice. As far as the practice is concerned, 52,000 doctors are registered under Unani registration.
264 hospitals are present across the country. 1,500 dispensaries are in the country, and 586 GMP certified drug manufacturing units are present in the country. Now, Pharmacopoeia Commission. The Pharmacopoeia Commission is for Ayurvedic, Siddha, Unani, and homeopathy. And nowadays, one more pathy, Sovarikpa, has also been included in it. Under this Pharmacopoeia Commission, 4 Pharmacopoeia committees are present: Ayurvedic Pharmacopoeia Committee, Unani Pharmacopoeia Committee, Siddha Pharmacopoeia Committee, and Homeopathic Pharmacopoeia Committee. What are the work of these committees or commission? 298 single Unani herbs have been standardized, and their monograph has also been published. 150 compound drugs have been made, and their monograph have already been published. Now, what are the research? Research is in the hand of Central Council for Research in Unani Medicine, which is under the Ministry of Ayush, Government of India. The second place are the teaching institutions which are doing research. Third one is EMR, extramural research. It is in the orbit of the Ministry of Ayush. CCRUM, Central Council for Research in Unani Medicine, has 23 centers across the country. The major outcome of research of CCRUM are: number 1, medicinal plant survey; number 2, drug standardization and quality control; number 3, preclinical or experimental research on animals; number 4, clinical research; and number 5, literary research. About 120 formulations have been tested in 13 diseases till date. 10 patents have been granted, and 43 patents are in pipeline. Government of India has also planned to develop All India Institute of Unani Medicine, which is now have become National Institute of Unani Medicine at Ghaziabad. 10 acres land has been allotted. The primary focus of this institution is PG and PhD and interdisciplinary research. This is a tertiary healthcare. Ministry of Ayush has also planning to establish a National Institute of Research in Non-Communicable Diseases for CCRUM at Faridabad. Now we come to the point: what are the challenges in Unani system of medicine? Number 1, our system, the Unani system of medicine, is an oriental or philosophical. So, but we have to prove it on the scientific design. So, how to prove with the scientific design? It is a big challenge. Number 2, the base-to-base variation of the drugs. Sometimes we see that some drug of the same unit is different, and in another shop it is different. So it is a big challenge that which drug is good and which drug is bad. Number 3 is shelf life of the classical drug. What is the life of our Unani system of medicine?
there is no scientific way in our system to tell that how much long this medicine will become destroy or low effective. Number 4, redesigning of the drug in Unani system of medicine. We know that India is a capital of diabetes, and day by day the diabetic patients are increasing. But our system, Unani system of medicine, have the sharbat, majun, lauk, and paste-like materials which has more sugar in its content. So we cannot give it to the sugar patient. So it is a big challenge in India to transform, to convert the sharbat or majun into the capsule or tablet form. These are the challenges. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Mohammad Arif, for such a nice lecture. Now I request Dr. Kumaran to please complete your lecture within 5 minutes. Good day to all and happy Doctors Day. Myself, Dr. Kumaran, Research Medical Officer Siddha, CGHS. Let me just brief you first what is Siddha, because most of the people don't know what is Siddha. Siddha system of medicine is a traditional system of medicine originated from Tamil Nadu. It backs from 4000 BC, believes to be from 4000 BC. The word Siddha is derived from its root word Siddhi. Siddhi matlab attaining accomplishment or eternal bliss. Those who have accomplished eternal bliss, they are called as Siddhas, who have created this system of medicine. Most of the literature is in Tamil, so it's one of the challenges faced in popularizing this system. Those who know Tamil language, they are more prominent in this system. Basically, I'm also from Tamil Nadu. This system is also in Sri Lanka, Malaysia, wherever Tamil community peoples are there, this system is there. According to Siddha system, our body is microsome and universe is cosmos is macrosome. Whatever happens in cosmos, that will affect human body. We are also a tiny portion of this cosmos. This is the basic concept here. You know very well that these infections used to be more prominent when there is any seasonal change. But microorganism is everywhere and every time. Why then infection is more prominent at the time of seasonal change, whether it's rainy season to summer season or summer season to rainy season? Because our immunity, body's immunity is getting affected due to this seasonal change. That's why we are getting infected by this kind of microorganisms. This is some linkage to the sentence, microsome and microsome. Siddha system is not only a art, it's a science. It has more than 32 different types of medicines, internal medicines, and 32 different types of procedures, external therapy procedures. You can see that because of this wide range of medicines, that is 32 types of internal medicine, there are different forms, types in the sense there are different forms. It is a very pure scientific way that Siddhas have scientifically derived medicines in that way. Some medicines are believed to be more than 100 years. Self-life is more than 100 years, which are made of minerals and metals, processed in herbal juice. It is believed to be having a shelf life of 100 years. Such kind of medicines are there available in Siddha. Mostly Siddha colleges are located in Tamil Nadu and in Kerala, southern part of India.
And we have Ministry of Ayush has established council, research council, Central Council for Research in Siddha to carry out the research activities of Siddha, and also National Institute of Siddha, which is an academic institution, research institution, which gives postgraduate education in Siddha. The basic concept of Siddha, it believes that every human body is having made of 90, which is called as tool or basic principles. Thank you. Thank you, Dr. Kumaranji, for having such a nice lecture, and you really enlightened us about the Siddha. Really, we don't know about the Siddha. This is the first time we are having such lecture. Thank you so much. Now this is about homeopathy. As everybody knows that homeopathy is similar similibus curenter, means likes cure likes. अच्छा आवाज कम आ रही है? अभी ठीक है? Okay. The name of homeopathy coined by its originator, Dr. Samuel Hahnemann, and likes cure likes means which is caused by the certain things will cure by that certain things. It is a system of complementary medicine in which elements are treated by minute doses of natural substances. Homeopathic treatment are highly individualized. Say कि 5 persons are suffering from rheumatoid arthritis. We will have to find the individual symptoms of the individual patient, and then that individuality should be in the medicine. Then it will cure the person. There is no uniform prescribing standard for homeopathic practitioners. The holistic nature of homeopathic means each person is treated as a unique individual. Homeopathic is holistic, which contains intellectual, emotional, spiritual, physical. All these are considered to treat a person. As everybody knows, the principles of homeopathy, mainly it contains law of similia, means it should be the similar medicine to the disease, similar disease. Law of simplex means simple. We have to give a simple medicine so that body should not be disturbed. Body should not have any side effect or any contraindication of the medicine. Law of minimum doses. In homeopathy, we think we give very minimum doses, very minimum doses. The potentized remedy of potentized remedy. We give minimum doses of potentized remedy. The law of similia similibus curenter, as I already told, that is likes cure likes. Law of similars implies a match between the primary symptoms of
the remedy and the symptoms of the patient. So basically, you have matched the symptoms of disease and patient. Law of minimum doses. The homeopathy is the name of minimum doses, very minute doses, very less quantity of medicines has to be prescribed for a patient. And single dose, not only minimum doses, but we have to give only single doses. One dose is sufficient to activate the immune system to treat the disease. We have to potentize the medicinal to arouse the medicinal power of a substance. Homeopathy cures and heals, removes disease from the root, restore back your good health. Homeopathy cares for you. Homeopathy is all you need. You do not need to visit different specialists for different disorders. System disorders. Your homeopathic treatment will be cover all of your problems simultaneously. It is safe. It has no side effect. They contains no added color, flavors, steroids, etc. Homeopathy is economical and everybody can afford it. It is painless way of treatment. We can remove kidney stones without any surgery. Homeopathy means better quality of life. Because homeopathic medicine does not create any side effect or any abnormal symptoms. So it gives patient soothing effects mentally and physically and emotionally also. We have the opportunity to treat the psoriasis, which is a difficult disease. We can treat it. Homeopathic medicines can treat the depressions also. And we have long list of medicines for growing children. Now these days, most of the children are having behavioral problem. For that, homeopathic is the best. For especially female diseases like breast problem, tumor problem, PCODs, and etc., homeopathy is the answer. In alimentary canal, like rectal diseases, homeopathy has a good role to treat the patient. Especially obesities. Now these days, most of the persons are depending upon the junk food. They are getting obese day by day. So homeopathy is the answer. Not only obesities, but we can treat dengue, malaria, Japanese encephalitis, etc. and cancer also. There is a myth about homeopathy that it is unproven science.
Homeopathy is based on experimental, pharmacological, and clinical data. Over the years, medicines have been extensively studied for their efficacy in variety of indications. Various researches are as per the internationally accepted standards have been carried out to prove the scientific basis of this science. So I want to say it is a scientific system of treatment. Scope of homeopathy, drugs proved on healthy human beings. As everybody knows that when it is proved on healthy human beings, they can tell you they can tell their symptoms. Whereas if we prove any medicine on animals, animals cannot explain. Animals cannot tell you that what is going wrong and what is good for him. So homeopathic is the best because it is proved on the healthy human beings. It helps in cure in structural changes until and unless it is of irreversible pathology like carcinoma, narcosis, gangrene, diabetic foot, etc. There is another myth that is homeopathy slow acting. But I can say that if a person is having 25 years of rheumatoid arthritis, do you think within one day it can be cured? So naturally it takes 25 years means at least 1 year, 2 years you have to give him to treat it. So time depends upon the disease, not the system. Suppose today I am having fever, then I will give one dose. Okay. Okay. So suppose a fever patient comes, I will give him one dose and he will be all right because it is acute. Most of the person think that white pills are given to everyone in all diseases. So it is not like that. We pour some liquid medicine in it and that is of different categories. Second myth is most of the person think that homeopathy intensify the disease. But it is possible where homeopathic aggravates the disease, where you have suppressed the disease. Only in that cases it may aggravate, but otherwise no. Another myth is that can diabetic patient take homeopathy? Yes, of course. Sweet pills doesn't harm the patient. Can homeopathy be taken with allopathic? Of course, yes. Like other pathy, homeopathy has also limitations. So thank you so much for patience sharing. मुझे लगता है कि डॉक्टर लखीला जी ने जो आपके क्वेश्चन होंगे मन में उनका सबका जवाब अपने आप दे दिया अपनी प्रेजेंटेशन से. थैंक यू डॉक्टर बीसी लखीला जी. थैंक यू फॉर चेयरिंग दिस सेशन आल्सो. एंड नाउ आई रिक्वेस्ट मधुसन जी, डॉक्टर मधुसन जी, आप डाइस पे आए और
वैद्य पूर्णिमा विद्या जी का एक स्वागत करें मोमेंटो देके। इसके बाद मैं अपने अध्यक्ष बीपी महावर साहब से कहूंगा कि वो आए और डॉक्टर बीएस शर्मा जी का स्वागत करें। इसके बाद आइए मैडम इधर आइए। लो भैया। Thank you, Dr. Mutanji. Now I request BP Maharji give a moment to Dr. B.S. Sharma ji. Sir. Thank you. Now I request CA Paras, come on the rise. And give a moment to Sri Gajendra Solanki ji. गजेंद्र सोलंकी जी ने बहुत अच्छी एनवायरनमेंट के ऊपर एक मतलब बहुत अच्छी कविता का पाठ किया था और मुझे लगता है एक सेमिनार एनवायरनमेंट के ऊपर होनी चाहिए और उसमें गजेंद्र जी की कविता का भी विमोचन होना चाहिए अच्छी तरह। पूरा एक सेशन घंटे का होगा जी। थैंक यू। विनोद गोयल जी, सीए विनोद गोयल जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए हैं और डॉक्टर बीसी लखड़िया जी का मोमेंटो चिन्ह देके एक मिनट सबसे लास्ट में एक बार फिर मैं आशीष त्रिपाठी जी हैं, नहीं आप आ जाओ आशीष जी, उनसे गुजारिश करूंगा कि एक मोमेंटो आप डॉक्टर कुमारनंद जी को दें। डॉक्टर कुमारनंद। हमारे बीच NFIT के दिल्ली के सचिव या अध्यक्ष सुनील जी हैं, मैं गुजारिश करूंगी मंच पर आए और अख्तर जी का, डॉक्टर अख्तर जी का एक मोमेंट। इसके बाद लंच एक सामने हॉल है उसमें रेडी है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही थी, हमने रिक्वेस्ट किया कि भी गर्मी बहुत है तो सामने हॉल में लंच रेडी है, आप सभी लंच में आप सभी लोग लंच में इनवाइटेड हैं प्लीज। और लगभग हम हाफ एन आवर बाद यहाँ फिर दोबारा से जो हमारा थर्ड सेशन है, अभी यार डिले है लेकिन कोई बात नहीं है, फिर जैसा भी है तो थर्ड सेशन शुरू करेंगे। आप आफ्टर हाफ एन आवर प्लीज हैव ए लंच। ग्रुप फोटो के लिए ग्रुप फोटो। दीपक जी आ जाओ, महावर जी गए, ललित जी एक बार मंच पे आ जाओ ग्रुप फोटो। अरे डॉक्टर अशोक आप भी आओ ना, आ जाओ। अशोक जी ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कम से कम 200 लोगों को 200 पेशेंटों को डॉक्टर लखीला जी से दिखाया है, तो लखीला जी एक बार जोरदार तालियों से। हमारे अजय गुप्ता जी भी है, मैं देख रहा था अजय गुप्ता जी आए नहीं, मंच पर। अजय जी बड़े हमारे सीनियर चार्ट अकाउंटेंट हैं और हमें हमेशा सहयोग करते रहते हैं अजय जी। अब नेक्स्ट सेशन में मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर पीयूष मेहरा जी से कि नेक्स्ट सेशन को चेयर आपको करना है, और हमारे बीच में उसमें अरुण कुमार जी आ चुके हैं और एक देवाशीष शर्मा जी आ चुके हैं। मेहरा जी, ये देवाशीष शर्मा जी आ चुके हैं क्या? अच्छा, तो हमारे बीच में अरुण कुमार जी आ चुके हैं, डॉक्टर देवाशीष शर्मा जी हैं, मेहरा साहब तो है ही हैं, वो RK जैन साहब भी आए हुए हैं और भारती बजाज जी भी हैं इधर, और जी कौन है, मोहन राव जी हैं, मोहन राव आए हुए, मोहन राव सभी आए हैं। तो सभी का ये नेक्स्ट सेशन के लिए हम तैयारी करते हैं। हम आधे घंटे बाद मिलेंगे, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है लंच के बाद यहाँ आए
और जो हमारे बहुत सीनियर जो डॉक्टर साहब हैं उनका आप उद्बोधन सुनेंगे, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लंच के लिए आप बगल में हॉल है, अलाउड प्लीज। दीदी आप लंच कर लीजिए। आशीष जी आप गए थे, मैं आपको याद किया। कोई बात नहीं, अब यही तो दिक्कत है फोन की चक्कर में।